Namaste, good evening, everyone. So today's session is really exciting, and it is all about marketing and sales for MFDs, and what else can be a good day to start such a session, which is the second day of the new year, and we are very privileged to have some awesome speakers today who will be sharing their ideas, their marketing strategies, what they have actually done in their life in past few years. So it will be really, really exciting for all of us to know everything. So I really look forward to learn from each one of them. And just to take you through the journey so far, today is the 18th episode, and let's have a little recap, and then we will begin with today's session. 5th of September was the first session, wherein we had the stalwarts of the industry. Then Dr. Radhakrishna Pillai in episode 2, and then we had the journey of evolution started with Professor Dr. Ajay Pathak from ICFI Business School. And then we had an episode on the Bollywood movies learning foreign investors, and then about intellectual properties, and then about youth talking and taking the business forward in our business. And then a session on fundamental analysis. 8th episode was all the women financial MFDs rather into this business who are doing extremely well all across India. Episode 9 was about niche marketing. 10 was about MFD or an RIA or both. And episode 11 was about dealing with students and youth, because that's the next generation and that's the big opportunity and a big business for all of us. Episode 12 was about MFDs in stockbroking business also. Some of the MFDs who are in stockbroking also, they shared their ideas on retirement planning and about stock picking. And then episode 13 was about HNI sales and how you can deal with HNI, how you can talk with HNI, and what is the strategy to actually continue to have HNIs in your portfolio. I think that is something which we all look forward to, and that was shared in episode 13. Episode 14 was about succession planning. Episode 15 was about global investments and international practices. Episode 16 was about how we can deal with HRs. The idea was when we need to collaborate with HRs of different companies so that we can actually do programs for the employees of that organization, and also about asset allocation, where an industry stalwart share their ideas along with the launch of asset allocation game. The last episode was on healthy living and healthy retirement, about collaboration and mind power for successful healthy living and understanding NLP. And let's have a little recap of the last week's session.
हम सबका एक कॉमन बिजनेस एक कॉमन थ्रेड होता है. Now mostly it is the जो हमारा customer, he should get better service of that. So that's what is a collaboration that all we were working for one common cause. In order to help COVID, some of the distilleries halted their production on liquor to start producing hand sanitizer. True or false? These are all positive answers, huh? And true is the correct answer. I think we are done, or probably yes. So here we have the results. Nivas, you are the winner. Ravi Shankar Goda, the second winner. Naresh. So all of you really need to connect with Nishant and get your vouchers for the business line, which is the 6 months subscription. So what are those thoughts? And out of the 60 to 90,000 thoughts, how many thoughts are dominating? How many times are we thinking about increasing the business? How many times are we thinking about our succession planning? How many times are we thinking about how do I grow the business? How many times am I thinking about collaborating? So this is what, most of the time we don't think about this. So dominant thought kya hai? And everything is created twice. This is the law of mind. So here we are today. Today, it's a pleasure to introduce our speakers today. First, we will have a session with Biranchi Sarangi, who is from Mumbai, an MFD working for many years now. And the best thing about Biranchi is that he is one of the vicious learner, okay? He is a big learner, rather, I will say. I have seen in my life, and he is one person who invests a lot of money in his own learning. I think whether it is $40,000 or $42,000 for one program, how many of you have spent so much of money? So this is what I will also request Biranchi to also share what are the type of programs which he is undergoing directly with people like Robert Kiyosaki and various other coaches across the world, directly learning from them. And he is also just completed his TOT, okay, with Bajaj. So he's also into selling not only mutual funds, but also insurance. So a lot of things to learn from Biranchi, and currently he is not in Mumbai. He is at his hometown at Cuttack. So he is taking the session from Cuttack today. So let's welcome Biranchi. Over to you. Thank you very much, Kanak bhai. Thank you all of you. And I wish you each and everybody a very happy new year. And this year, we are going to create a history. It's awesome. And I believe the year will denote itself that who you are and why you are doing this. So with this, I am starting my session. Is it okay if I little bit give something about myself? Yes, sure, Biranchi. We really Great. Okay, great. So myself, Biranchi Sarangi, a financial happiness coach. Simple, no financial advisor, no nothing. We are just the caretaker of our clients. How many of you just tell me you believe love and affairs? I mean, if you just believe into love and affair relationship. Interesting. It means rest all the people are not loving. Why I'm asking these questions? If you are into love, your family member, similarly, you must have a love and romance with money. And if we must, being a MFD, mutual fund distributor, if we are into love and relationship with money, then we must
love and relationship or romance with sales and marketing, which is my heart. I love sales. I'll do sales till the time I am there in the planet. So sales and marketing are the key area. We are into sales and marketing. So these sessions will be little bit interactive session. So first of all, I thank you each one of you for giving this and for connect by and for all my friends over here, all the volatility coaches and all the guests who are there. And this is the one of the most beautiful organization where Connect by is just giving each and everybody opportunity. How we all the brothers and sisters can friends we can help each other to upgrade our business into next level. Believe yourself that you are the game changer. If we have came into this planet, there is there is some purpose behind it. You have not chosen this particular profession that you have chosen it. There is you have not automatically came into that profession. You have purposefully chosen this profession. And I believe you people are the amazing. First of you, I'll give you, I will congratulate each one of you for you are doing an amazing job. That is why I am nothing. The Prime Minister of India is also acknowledging our job. We must not doubt who are the wealth creators. And you people are amazing. And with this, my bottom of my heart, I am trying to give something. If something can be added value in your sales and marketing, it will be really helpful. And I'm always there to with all my volatility coaches friends to utmost any extent level of support. I am going to support them. So with this, can we start that session? Great. What is your interest? What exactly you want to learn from today? What is your one thing you want to learn? Superb. Ramji? Okay, great, sir. So first of all, today we are going to how I am just doing my own HNI sales calls. For before I start any meeting, what exactly I am just doing my calls, I'll just share those things that this is no learning and training. This is purely a practical sessions, and whatever how much we will be interacted with each other, definitely I believe that you can take the maximum best benefits out of this. Is it okay? Fine. Thank you. So I thank one of you again. Once again, I want to thank you to each one of you for giving me this kind of opportunity. Believe me, my friends, we all are the amazing persons, and we are going to create an history. And this 2021, at least, I wish each and everyone's income must be go up to at least 11 times, not 1 time, 2 time, 3 time, 4 time, 5 times. You must be behave yourself like a sales samurai. How many of you know about sales samurai? Know about sales samurai? Samurai are the people, those are the Japanese warriors, right? And before they preparing for any kind of battle, they prepare their own death ceremony. They celebrate their own death ceremony. Then they are getting down into the battle. And you people are not anything less than that. Because managing clients' money, managing each and every emotions of the client is not less than a job of a samurai. So that is why we must be more equipped, more powerful with each and every of our stance. So let's start the sessions. So is it okay if I'll ask something? Okay. So tell me something about what do you mean by sales?
What is sales? बेचना। मयंक भाई बोल रहे हैं बेचना। ग्रेट ग्रेट। Thank you. So sales is something that sales is to identify and uncover a need and then satisfy the need with our product and services for mutual benefit. Right? How many of you believe that customer are king? Customer is king. Customers are king. My dear friends, it's a myth. Customers are king. They are not king, not even queen. Customer is nothing. You are the king. Try to understand. For your kind information, you must understand king has always having the more power, supreme sovereign power. If they will become king, then you have to follow them. So if you become king, then only he will be always follow you. So you want to become making them king or you want to become king? Customers are professional friend for mutual benefit, mutual care, mutual trust, mutual relationship. They have need. That is why they are buying. Right? So customers are never ever king. हमने उनको किंग बनाया है, वो कोई किंग नहीं है. जानते हैं क्यों हम किंग बोलते हैं? बिकॉज हमारे पास कस्टमर का प्रोस्पेक्ट का लिस्ट नहीं रहता है. अगर मेरे पास 400 कस्टमर का वेटिंग लिस्ट में पड़ा रहेगा ना, मैं सिलेक्शन करके रखूंगा कि व्हिच कस्टमर आई नीड टू ऑनबोर्ड माई फॉर मी, व्हिच कस्टमर आई शुड नॉट. एंड फॉर दैट व्हाट नीड टू बी मस्ट? मार्केटिंग नीड टू बी मस्ट. फॉर दैट इफ यू आर वेरी वीक इन मार्केटिंग, देन कस्टमर को किंग बोलना पड़ेगा. राइट? सो दैट इज वाई. And in the latter part of the session, might be in last 15-20 minutes, I'll cover little bit about marketing, because marketing is a vast subject. It will take at least 2 months. Every day 3 hours if I'll take the session, it will take minimum 2 months, 60 days into 3 months, 60 days into 2 to 3 hours. That is marketing. And once your marketing generated enough leads, that lead will be given to the sales department, then sales will do their job. So for sales, whether we are going to sales meeting or our team members are going to sales meeting, whoever, it's fine. वो सेल्स मीटिंग में उनको क्या क्या बात करना है? एक अननोन पर्सन है, उनके साथ हाउ वी सपोज टू स्टार्ट ए मीटिंग. सो आज के बाद हम कभी भी कस्टमर को कभी भी किंग नहीं मानेंगे. अगर आपने किंग मान के रखे, मैं जिंदगी में कभी भी कस्टमर को किंग नहीं मानता हूं. मानता था. When my life, my mentor Blair entered, he said never ever, never ever. Blair Singer and Robert Kiyosaki every Thursday in South Arizona, they are doing the practice for more than 2 years. Objection handling. Never ever they will bargain. कस्टमर को बार्गेनिंग का पावर देना ही नहीं है. What you supposed to expect from us, what you should not expect from us. There is a rule book, code of honor for the session. आप अगर हमसे हमारा सर्विस लेते हैं, आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. राइट? Just one second. Try to understand, because
हम अगर कस्टमर को किंग बोल दिया, हमारा लैंग्वेज क्या है, सर जी, सर सर सर, कितना भी सर सर बोलेंगे, बिकॉज द काइंड ऑफ लैंग्वेज यू आर एक्सप्रेसिंग, the same kind of belief is reprogramming on your mind. Last time Harish bhai has already cleared the entire things in last session. Because हमारा language जैसे रहेगा ना, उस टाइप का belief हमारा वैसे ही रहेगा. What kind of, it's a sales is a science. The kind of language we are using for our clients or customer, that kind of belief is creating. And if the belief will be that, whether if our belief is very high and very high conviction, the thought will come in that positive way, and the kind of feelings and emotions will come away that way. And अगर आपका feelings and emotion बहुत strong है, then action supposed to be strong. If action will be strong, then result supposed to be in your favor. So इसलिए अपना कोई भी कॉल जाने से पहले हमारे पास रहे नहीं रहे, हम कभी देखें, कभी कोई बिल्डर के पास जाते हैं, वो कैसे बोलते हैं, सारा फ्लैट बिक चुका है, कस्टमर भाग भाग कहते हैं हमको बुकिंग करना है ना, खत्म हो गया है ना. हमारे केस में क्या होता है, इन कंप्लीटली डिफरेंट, राइट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर दो जन के अंदर फाइटिंग होता है, जिसके पास जो ज्यादा एनर्जी रहता है, द person having more energy always wins. So from today onwards, if you want to make your customer king, if they will be into high energy, always you are going to lose the game. Never ever. We must engineer कि customer को as a friend, he is a professional friend, it's okay, absolutely fine. First of all, अपने को बहुत थॉट्स चेंज करना बहुत जरूरी है. सो हमारी भाषा में सेल्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स? सेलिंग इज व्हाट? एनी चार्ट्स? कनक भाई, इफ यू कैन सी द चार्ट्स, व्हाट डू यू मीन बाय सेलिंग? सेलिंग इज डैश. सेलिंग इन माय इंडस्ट्री इज डैश. Customers are dash. Business is dash. I as a salesperson, I'm a mind में क्या आता है? What is your little voice is saying? I must recommend one book, that is Little Voice Mastery by Blair Singer. छोटा दिमाग, बैक ऑफ द माइंड क्या बोलते हैं? मज्जा मज्जा मज्जा. सेल्स बहुत डिफिकल्ट है. If you are preparing for your worst sale, then you are the best amazing person. Prepare for your worst sale. और क्या हो सकता है? What kind of fears are there? Fear of rejection, fear of ashamed. किस चीज की fear है? Fear of customer will not buy, somebody will think something. What kind of fear are there? So that is why जो हमारा लिटिल वॉइस जो बोलते हैं, स्मॉल माइंड, यू मस्ट देयर. सेलिंग एंड मार्केटिंग इज फुल ऑफ एनर्जी, दैट रिक्वायर्स एनर्जी, दैट रिक्वायर्स एनर्जी. यू कैन नॉट, बिकॉज आपकी अगर एनर्जी डाउन हो जाएगा, क्लाइंट अगर कुछ भी बोलेंगे, मार्केट ऊपर नीचे हुआ, फिर वो इमोशंस के साथ डील करना है. इट्स ओके, फाइन सर, प्लीज आप शांत रखिए. हम वोलेटिलिटी गेम की है ना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग. एक बार आपने शादी किया है ना, मुझे रिलेशनशिप बनाने के लिए टाइम तो दीजिए, 7 साल 10 साल दीजिए. तो 1 साल के अंदर अंदर हम बोलेंगे हम डिवोर्स करेंगे. इट मीन्स देयर इज अ फ्रॉम वेरी फास्ट टाइम, हम ऑनबोर्डिंग करने से पहले सिलेक्शन बराबर नहीं हुआ है. सो दैट इज व्हाई if there will be 2 person and 2 person are into sales, person having higher energy always wins, always. तो आज के बाद, एंड ऐसा नहीं, हमने ये नहीं बोलते हैं कि क्लाइंट के साथ झगड़ा करना है, एरोगेंट नहीं, नो.
with a polite manner. How to start the call, then setting the context. Number 2, ask questions, ask more and more and more and more questions. अगर रिटायरमेंट प्लानिंग है, सर क्यों रिटायरमेंट चाहिए, उनको ही पूछिए. चाइल्ड एजुकेशन सर क्यों चाहिए, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. नंबर कम्स, अपने को लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन दोनों को यूज करना है. Left brains are at quantitative statistics and right brains are emotions. When logic ends, then magic starts. When logic ends, magic starts. And my mentor always says, smart loses money, dumb makes money. सेल्स में उनको क्लाइंट को एजुकेट करके रखना जरूरी है. सर आपको स्मार्ट बनना है या वेल्दी बनना है, व्हाट यू वांट टू बिकम, यू वांट टू मोर स्मार्टर और यू वांट टू बिकम मोस्ट वेल्दीएस्ट पर्सन. दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो दैट इज व्हाई एनी इवेंट हैपेंस, जैसे हमारा माइंड को हम प्रोग्राम करते हैं, जिस टाइप का इवेंट होता है, द काइंड ऑफ रेस्पॉन्स जैसे होता है तो उसका आउटकम वैसे ही होगा. ऑलरेडी लास्ट सेशन में हमारा वोलेटिलिटी कोचेस हरीश भाई ने ऑलरेडी बताए हुए हैं. आई एम नॉट गोइंग टू मोर डीपर इनटू बिकॉज माइंड पार्ट. एंड उस सेशन में आपको यू मस्ट डू द P&L balance sheet of entire life, profit and loss account balance sheet of your human life. पहले start the meeting with your positive body image. सर क्या आपको, अगर इट्स ए कंप्लीटली न्यू फ्रेश कॉल है, कंप्लीट न्यू फ्रेश कॉल है, सर क्या आप जानना चाहेंगे कि जिंदगी जब स्टार्ट होता है, जिंदगी खत्म होने के अंदर आपकी लाइफ की बैलेंस शीट, अभी आप जहां पे खड़े हैं आपका नेटवर्थ कितना है, जिंदगी का नेटवर्थ. वुड यू वांट टू नो व्हाट इज योर लाइफ नेटवर्थ? बोलेंगे डेफिनेटली. आर यू श्योर? यस यस. बट कैन आई मेक वन रिक्वेस्ट? यस. इफ यू after doing that test, whatever the result will come, please don't feel any disheartened. अभी ऐसे बोलेंगे ना अननोन पर्सन, स्टार्टिंग से बोलेंगे आप डिसहर्टन फील मत करिए, उसका मतलब क्या है, कुछ तो डिसहर्टन होने वाला है. तो इमीडिएटली कनेक्शन बनना चालू हो गया मेरे जिंदगी के बारे में, मेरा लाइफ का नेटवर्क स्टेटमेंट. Because if you are earning too much of money, it means you are not everything fine. 10 out of 10 नहीं है. तो first, to whom you love you most? खुद को, obviously खुद को. Who is your best life partner? You yourself. Because you love your body, the body which is the permanent address where you are residing at. तो खुद के लिए एंड अपने फैमिली के लिए कितना टाइम देते हैं, तो 10 आउट ऑफ 10 में क्या रेट करेंगे, उनको ये सवाल पूछना है. एक्सेल शीट में आप बना के रखेंगे, ठीक है. फॉर सेल्फ लाइफ, ओन लाइफ, 10 आउट ऑफ 10 में कितना आप रेट करेंगे, कितना टाइम देते हैं. वो 10 में जो भी देंगे 2 3 व्हाटएवर, उनको ही बोले देने के लिए. देन सेकंड, फॉर योर हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए टाइम कितना देते हैं. Second, 10 out of 10. Then number third, self development नहीं, number third, आपका लीजर एंड लाइफस्टाइल, उसके लिए कितना आप मार्क देंगे. हाउ मेनी ईयर, मतलब साल में आप कितने बार आप इंडिया में या ओवरसीज में आप फैमिली को लेकर ट्रैवल करते हैं. आप नहीं जाते हैं, ठीक नहीं है सर. तो यू मस्ट डू फाइनेंशियल प्लानिंग.
एजुकेशन का गोल कंप्लीट नहीं हुआ, आपका स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ, यू मस्ट डू फाइनेंशियल प्लानिंग. एवरी टाइम सेल्स इज हैपनिंग. देन व्हाट नेक्स्ट? वो 10 आउट ऑफ 10 देंगे कि वो साल में अगर कितने बार खुद के घर पे होम टाउन जाते हैं या फिर बाहर जाके मतलब फैमिली को लेके फॉरेन जाते हैं घूमने के लिए, कितना पैसा खर्चा करते हैं वो अपने ऊपर और अपने फैमिली के ऊपर. बिकॉज द पर्सन हु इज नॉट विल मोर हैप्पी कैन प्रोड्यूस मोर. इट्स अ साइंस बिहाइंड इट. तो अगर इतना पैसा कमाते हैं, अगर फैमिली को लेके घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं, देन नो पॉइंट ऑफ मेकिंग मनी. देन नंबर 4, सेल्फ डेवलपमेंट, कैरियर डेवलपमेंट. इट इज बाय ह्यूमन लाइफ, जो कि बाय टोनी रॉबिन्स. आई हैव अटेंडेड यूपीडब्ल्यू, अनलीश द पावर विद इन ऑफ टोनी रॉबिन्स. तो आई थिंक दैट इज अप्रोक्सीमेटली सम $1200. तो वो मैं अटेंड किया हूँ एंड उसको मैंने यूज करता हूँ. सिंपल सी बात है. बट वो इन ए फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर्मेट, एक्सेल शीट में लेके. देन नंबर 5, स्पिरिचुअलिटी, ग्रेटिट्यूड. कितना आप स्पेंड करते हैं उसके ऊपर. 10 आउट ऑफ 10 वो खुद ही रेटिंग देंगे. देन नेक्स्ट, सोशल एंड चैरिटी. आप सोशलिटी एंड चैरिटी में आप कितना दे, हाउ यू आर डूइंग, हाउ सोशल यू आर. नरेंद्र मोदी हैविंग द हाई फेस वैल्यू, 10 आउट ऑफ 10. तो आपकी फेस वैल्यू क्या है? हाउ मेनी पीपल विल बी रिकॉग्नाइज यू. सो उसमें वो खुद नंबर देंगे. देन कम्स वर्क लाइफ बैलेंस, वेदर यू आर इनटू बिजनेस और यू आर इनटू सेल्स, क्या हो जाएगा. देन दे विल सब उनको ही देने के लिए बोलिए. एंड लास्ट, सर टेल मी ऑनेस्टली, मनी एंड फाइनेंस, क्या नंबर देंगे इसमें 10 आउट ऑफ 10 में. जब ये सारा नंबर को जोड़ेंगे ना तो 10 आउट ऑफ, उनका स्कोर नेवर एवर 8, एंटायर लाइफ को मैंने 7 to 8 पार्ट में डिवाइड किया हूं. आउट ऑफ 80 दे विल नेवर एवर स्कोर मोर देन 30 to 40 के बीच में. सर इफ यू आर स्कोरिंग ओनली 30 out of 80, around 30-40%, never ever expect your child to be more super produced. आप इतना इंजीनियर, इतना चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप इतना हाई नॉलेजेबल होने के बाद इतना पैसा कमाते हो, आपकी लाइफ की बैलेंस शीट ये है, एंड आप आपके बच्चों से एक्सपेक्ट करते हो कि करो, पहले खुद करके चेंज करो. यू आर नॉट टेकिंग एक्शन, राइट. तो वो अपने को करके स्टार्ट करना है. तो स्टार्ट द मीटिंग विथ बॉडी इमेज, वॉइस, हाई नोट में अपना वॉइस रहना चाहिए कभी भी, बिकॉज आई ऑलवेज शेयर. फिर उनको बीच बीच में पैराफ्रेजिंग करना है कि सर आप बराबर समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं, आर यू ओके विथ दिस, वी हैव टू डू इन दैट वे. देन क्लियरली क्रिएटिंग a rapport building also. What kind of personality is there? वो एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है. ये टेलीकॉलिंग के स्क्रिप्ट है. कोल्ड कॉल है, वार्म कॉल है, हॉट कॉल है. टेलीफोन के लिए रॉन्ग कॉल, राइट कॉल. आपको टेलीकॉलिंग के लिए उसका स्पेशल ईमेल मार्केटिंग है, जो कि बाद में कोर्सेस हम समझ पाएंगे आगे के इन कमिंग डेज. उसके लिए स्पेशल पिच भी है अपने पास, उसके लिए हम कमिंग डेज में जानेंगे. नेल द फर्स्ट 20 सेकेंड 30 सेकेंड्स में अपने को एलिवेटर पिच क्रिएट करना है. देन कॉन्टेक्स्ट सेट करना है कि सर ये आज आपको 18 सवाल मैं पूछने वाला हूं. वेरी सिंपल, प्रैक्टिकल है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. ये 18 सवाल आप खुद को चुपचाप अकेले में जाके, किसी को साथ में लेके, एलोन, अंधेरे में, रात में, खुद अपने खुद के बारे में सोचिए. एंड हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड. पार्ट 1, सर ये 18 सवाल, इट विल टेक मिनिमम 1 to 2 आवर्स, एंड 1 से 2 घंटा जो टाइम लगने वाला है उसके अंदर ये 3 पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. बिकॉज कोई अननोन पर्सन के लिए, आर यू रेडी टू फेस द काइंड ऑफ सच, वुड यू लाइक टू फेस सच का सामना.
आप आपके बारे में जानना चाहेंगे? देखिए कंप्लीटली अननोन पर्सन है, सर आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू करेंटली, एंड ये जो मैं लिख रहा हूं ना आपको मैं देने वाला हूं, एक्सेल शीट में हो पेपर में हो, मैं आपको देने वाला हूं, आई एम गोइंग टू गिव यू व्हाट डू यू करेंटली। वो बिजनेस कर रहे हैं या जॉब पे कर कुछ भी कर रहे हैं, वेदर ही इज ए सैलरीड प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशनल, और ही माइट बी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, और ही माइट बी ए बिजनेस ओनर। सर आप क्या करते हैं, कितने साल से करते हैं? नंबर 2 क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन डूइंग इट, सिंस हाउ लॉन्ग यू आर डूइंग दिस बिजनेस। ये हमको पता है, इसी सिंपल सिंपल चीज है उनको, लेकिन उनको लग रहा है कि शायद में लास्ट में कुछ मिलने वाला है। क्रिएट द काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी। सर टेल मी ऑनेस्टली, एंड इसको दिखाना नहीं है, कुछ नहीं दिखाना है आपको, चुपचाप खाली आपको मॉक कॉल करके आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। सर व्हाट डू यू लाइक टू एंजॉय द मोस्ट अबाउट योर प्रोफेशन एंड जॉब और बिजनेस। सर आप मुझे एक बात बताएंगे, एक सिंपल कन्वर्सेशन, सर आपकी बिजनेस में सबसे बढ़िया मजा क्या लगता है? वाई 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 वाई, आस्क वाई, वाई यू थिंक दैट आई एम डूइंग, आई एम ए आईटी प्रोफेशनल, ठीक है इट्स फाइन सर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हेड ऑफ आईटी हूं, कितने, सर क्या, क्यों आप आईटी क्यों चुने, क्या मजा आया उसमें? जब भी हम डिटेल में क्वेश्चन करते हैं, प्रोब करते हैं उनको ना, दे विल बी वेरी मच ओपन टू आंसर। अरे पहली बार somebody is asking me about my profession, सीधा मैं प्रोडक्ट की बात, ना एसेट एलोकेशन, ना म्यूचुअल फंड, ना इंश्योरेंस, कुछ बात ही नहीं करना है। सर आपकी जो सेक्टर है ना, why you are become so, why you are engineer, why you are teacher, आपकी टीचिंग प्रोफेशन में क्या? सर टेल मी सम 5 गुड थिंग अबाउट योर टीचिंग लाइन, इफ यू आर ए टीचर, इफ यू आर ए पायलट, इफ यू आर ए डॉक्टर। सर आपके डॉक्टर के बिजनेस में 5 अच्छा चीज क्या है? उनके चावल से उनको खिचड़ी पका के देना है। My dear friends, are you understanding something? Is it make sense? Is it practical? Then next questions. Sir, can you tell me honestly, what is the most exciting moment of your life in your job? लास्ट 3 साल में या लास्ट 5 साल में आपकी लाइफ में क्या क्या एक्साइट मोमेंट हुआ था? डिकोड इट। वो फिर बताएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम उनके बारे में जानने की कोशिश करें, उनकी जो अंदर की जो अनटोल्ड पेन है ना, वो धीरे धीरे निकाल के बताने वाले। इट इज समथिंग अबाउट देम, हु इज द डिसीजन मेकर, हु विल बी गिव अस बिग मनी, बिग चेक। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू लाइक, थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू लाइक टू एंजॉय द मोस्ट अबाउट योर प्रोफेशन और जॉब। मुझे मेरे बिजनेस में क्या मजा आता है? सर टेल मी, सर आपकी बिजनेस में ना 5 बहुत अच्छा चीज बताइए। एंड किसी को अगर एक क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया, क्यों अच्छा लगे सर ये 5 क्यों, वाई दिस 5, फिर वो एलाबोरेट करेंगे। सर ऐसा कोई सिचुएशन हुआ था क्या, कोई स्टोरी हुआ था क्या, कुछ इंसिडेंट हुआ था क्या? व्हाट वाज द मोस्ट एक्साइटिंग मोमेंट ऑफ द प्रोफेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है, 2 अच्छा क्वेश्चन, 2 क्या बोलते हैं ना, एक मोस्ट प्लेजर क्वेश्चन, फिर आपको और एक पेन क्वेश्चन पूछना है, पेनफुल, जो कि उनको दिल को पूरा टच करे, जख्म भर दे पूरा, एकदम भयंकर, एकदम पूरा सीधा शूट। सर व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ योर प्रोफेशन। अभी उनकी दुखती नस को आपने पकड़ लिया, किधर जाएगा अभी? सर क्यों, व्हाई यू थिंक, आई टेल यू, बिकॉज मैं ऑलरेडी 5 इंटरव्यू कर चुका हूं चीफ फाइनेंस ऑफिसर एंड एमडी सीईओ ऑफ द फाइनेंस हेड के, एंड उसमें से जब ये क्वेश्चन पूछा ना, वो खुद ही आंसर देने लगे, दे बिकम एम्बेरेस्ड। सवाल पे सवाल जब भी पूछने के टाइम में मैं उनको एक क्वेश्चन पूछा, सर टेल मी, यू आर द फाइनेंस हेड ऑफ द कंपनी, यू आर गेटिंग 1.5 करोड़ टू 2 करोड़ सैलरी, डू यू नो एक सिचुएशन पे
आपके घर में फैमिली मेंबर कोई आईसीयू में, दूसरे सिचुएशन में आपका ईयर एंडिंग क्लोजिंग है एंड आपने बीइंग ए ऑडिटर आपको साइन करना है, कोई गड़बड़ होता है ना, आप जाके अंदर जाएंगे, जेल जाएंगे, यू विल बी इम्प्रिजन्ड. Which situation will choose? This is the value of an advisor. We are adding true value because we are doing the business of emotions. You must master and sales. Definitely. What are the most biggest challenges of your profession? Sir, tell me 5 top 10 challenges of your profession. उनको ही पूछना है सवाल. एंड आगे जाके मैं बताने वाला हूँ सेल्स में, आई थिंक हमारे जो मार्केटिंग के फ्रेंड्स आने वाले हैं, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्पफुल, वो भी बताने वाला हूँ. व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ योर प्रोफेशन, वो बता देंगे. सर टेल मी व्हाई, व्हाट डू यू डिसलाइक अबाउट योर जॉब. मुझे मेरे जॉब में क्या अच्छा नहीं लगता है. जैसे कि बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे मेरे नंबर में क्या अच्छा लगता है, टाइमली किसी को मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करके उनका किसी का फाइलिंग करना. सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है, डेट बार बार एक्सटेंशन, मतलब अगर अपने को टाइमली ऑडिट रिपोर्ट बनाना पड़ता है, टैक्स फाइलिंग करना पड़ता है, नहीं होगा ईयर एंडिंग करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है. इट्स ए चैलेंज. उनकी प्रॉब्लम को पकड़िए. डोंट बिकम योर कस्टमर किंग. देन वहां पे जब उनका प्रॉब्लम मालूम पड़ गया ना, आप किंग बन गए. वो खुद ही बताएंगे व्हाट डू यू डिसलाइक अबाउट योर प्रोफेशन एंड जॉब और बिजनेस. ये हो गया पार्ट 1. पार्ट 1 में अपने को मालूम पड़ गया कि व्हाट इज द काइंड ऑफ दिस प्रोफाइल, उनके बारे में पता चल गया. अभी उनके साथ थोड़ा प्यार मोहब्बत करना है. सर एक बात बताइए, अगर भगवान आपको क्वेश्चन पूछेंगे, लॉर्ड कृष्णा टुमारो, लॉर्ड कृष्णा विल कम डाउन एंड से, बेटा बोलो आपको जो चाहिए मांगो, आपके टॉप 3 ड्रीम क्या है जो कि आपने बचपन से अपने इसको दबा के रखे हैं, मुझे बताओ. भगवान ने मुझे भेजे आसान आजान मैसेंजर, बताओ आपके टॉप 3 ड्रीम क्या है, वो वहां पे लिखवाना है. व्हाट इज योर टॉप 3 ड्रीम, व्हाट इज योर टॉप गोल्स, टॉप 5 गोल्स. क्यों ये गोल, क्यों, व्हाई, आस्क व्हाई, व्हाई 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 व्हाई, हाउ इट इज गोइंग टू मेक इट डिफरेंट. What would you like to achieve before you leave the world? Sir, tell me, भगवान ने यहाँ पे आपने you got the best life as a human being. जब आपने ह्यूमन बीइंग के हिसाब से आपने आए हैं, तो मुझे बताइए ये दुनिया छोड़ने से पहले आप क्या अचीव करना चाहेंगे. कौन सा 3 चीज या कौन सा 5 चीज, एंड क्यों, हाउ इट इज गोइंग टू मेक इट हैपन. बिकॉज हम ऑलरेडी बुक पढ़े साइमन सिनेक के वाई, स्टार्टिंग विथ वाई. व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम, इफ गॉड आस्क यू, यू विश फॉर कार, व्हिच वन वुड यू आस्क फॉर. अगर भगवान आपको पूछेंगे कौन सा कार आपका ड्रीम कार है, तो आप भगवान को क्या आंसर दोगे. उनकी अंदर की जो अनटोल्ड पेन है ना, वो निकल के आ गया है. सर अभी यही जो कार है ना, अभी ये सपना क्यों जानते हैं आया है बाहर, क्योंकि भगवान चाहते हैं ये सपना आपका पूरा हो. इसीलिए मैं एज ए वेल्थ क्रिएटर, माई रोल इज जस्ट टू सपोर्ट यू टू मेक दिस हैपन. भगवान इसीलिए मुझे भेजे हैं आपके पास, टू मेक योर ड्रीम ट्रू. क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोफेशनल फ्रेंड, यू आर डूइंग रोमांस, यस और नो. What kind of dream home would you like to live in? What is your monthly dream income? सर मुझे बताइए आपके मंथली ड्रीम इनकम कितना आना चाहिए, एंड बाय व्हाट डेट. मैं लास्ट टाइम एक पीपीटी भेजा था, क्लैरिटी ऑफ योर क्लियर गोल एंड कौन से डेट तक एंड व्हाई, हाउ इट इज गोइंग टू मेक इट हैपन. व्हाट इज योर ड्रीम इनकम आफ्टर रिटायरमेंट. जब वो सामने से ही बोल रहे हैं, सर अभी मत सोचिए कैसे होगा, डोंट थिंक अबाउट व्हाट एंड हाउ. नाउ क्वेश्चन इज व्हाई, व्हाट एंड
If you don't have strong why, then you will cry. Part 3. Now, if you achieve all these dreams, then what would it means to you personally? अगर भगवान ने आपकी सारे इच्छा, आपकी सारे मुरादें पूरी कर लिए, एंड टच वुड गॉड ग्रेस आपके सारे गोल्स पूरा हो गए, मुझे एक 3-4 फ्लैट चाहिए था, रॉयल डिलक्स, मतलब मेरे पास प्राइवेट जेट रहेगा, कंपनीज रहेगा, बिजनेसेस रहेगा, having net worth of more than 100 crore, 200 crore, whatever. If God grace everything fulfilled, how you will feel personally, honestly? What all are you doing now to achieve all these goals? Next questions. It is a pen question. This is a pure pen question. What all are you doing now to achieve all these dreams? आप इस ड्रीम को पाने के लिए आज तक आप सर क्या कर रहे हैं? सर ये आपकी अंदर की दबी हुई मतलब बचपन की दबी हुई, इट्स योर अनटोल्ड पेन. आज तक आपने किसी को बताए नहीं थे, अभी आपने बता दी है मुझे. ऑनेस्टली बताइए आपने इसके लिए क्या कर रहे हैं? If you continue to do the same thing in next 5 years, just like the way you are doing since last 5 years, how it is going to happen? You have been working in the last 5 years, then would you achieve all your dreams? अगर the way you worked for last 5 years, ये जो आपने सर मुझे सारा ये 18 गोल मुझे बताए, these questions, अगर आपने सेम वे में आपने करते करते गए, एंड सेम द वे यू डिड इट फॉर लास्ट 5 years, मत करिए, डोंट डू. आपका जो पर्सनल लाइफ की जो हमने जो सर बैलेंस शीट की जो रिपोर्ट निकाले ना, ओनली 30%. सर फॉर दिस गॉड हैज सेंड अस. व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्रांसफरिंग टू नेक्स्ट जनरेशन? व्हाट इज द काइंड ऑफ लीगेसी यू वांट टू लिव? क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज हॉटिंग यू? What is making you ashamed? What is stopping you not to take action? Tell me. I'm your professional friend, sir. I'm committed to support you. I'm really here to support you, because for me, I'm on a mission. We are on a mission to educate, help, handle, support all the interior designers, architects, doctors, top to middle management, salaried IT professionals, top to middle management, top management, working professionals of the manufacturing company, IT company, healthcare company, and pharma company, to make them reach them their financial freedom and financial transformation. If you want to know, sir, come and join us on the next session. वहां पे सेल नहीं करना है बिल्कुल. इट्स ए जस्ट ब्रेकिंग द आइसबर्ग. फर्स्ट टाइम डेटिंग चल रहा है, पहली बार हम मिल रहे हैं. ऑन द वेरी फास्ट मीटिंग में हम कभी प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? हम वेरी फास्ट मीटिंग में कभी भी ना, फास्ट सेकंड मीटिंग में डायरेक्टली मैरिज का प्रपोजल नहीं देना है. मैरिज विल हैपन ऑटोमेटिकली. इफ यू कंटिन्यू टू, उनको पूछिए लास्ट में, सर ऑनेस्टली टेल मी, कैन यू बिकम ऑनेस्ट फॉर मी? Can I ask you one question? Will you do me one favor? If you, the way you are doing since last 5 years, sir, you have, these are the goals and you cannot deny. And मुझे पता है अभी आपकी कंपनी में ये आपकी चैलेंजेस है. जानते हैं आप क्यों काम कर रहे हैं? ये आपकी मजबूरी है. आप बेटर यू विल सफर बट यू विल नेवर टेक एक्शन. See, this means if you come across an opportunity by which you can definitely achieve all your dreams, then you will say surely grab it, is not it? Then सर यही आपको ना ये दिस 18 क्वेश्चंस को पूछ के आपको मीटिंग स्टार्ट करना है. एंड फाइनल देन हमारा जो वीडियो है कि हाउ द लाइफ ऑफ ए मैन, उसमें हम वो वीडियो प्ले करके कैसे कैसे बन सकते हैं.
and eventually you have to play your what is you have to position yourself you are the best. आपके अलावा दुनिया में कोई बेस्ट नहीं है, कोई कंपनी बेस्ट नहीं है अदर देन यू. यू आर द बेस्ट. किससे खरीद रहे हैं? मेरे से खरीद रहे हैं. यू आर योर ओन प्रोडक्ट. सो एनुअल कॉल कैलकुलेशन का आपका करना चाहिए. एनुअल डिजायर इनकम कितना है उनके लिए बनाएंगे आप. तो कितना इनकम करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, देन ये आपके लिए रखना है कि नंबर ऑफ सेल्स कॉल कितना है, नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स कितना जनरेट हो रहा है, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स डिवाइड नंबर ऑफ डेज. ये मैथमेटिक्स बहुत इजी है. देन ऑन द स्पॉट उनकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है, मनी, अथॉरिटी, नीड, अर्जेंसी एंड ट्रस्ट के हिसाब से अपने को उनका अर्जेंसी क्रिएट करना है. एंड ट्रस्ट यू बिकम द ट्रस्टेड पार्टनर. कैन वी बिकम ए गुड पार्टनर? Sir, the way you are doing your life partner, making your life partner, same way, can we become a professional financial freedom partner? I really wanted to add value in your life. Please allow me. Help me with, just give me some one trial. And what they will object? The law of most objection. Cluster clear objection है in category. They have price. Sir, what is stopping you? Our price is expensive. Our quality are inferior or superior. आपका हर एक का इसका प्राइस ऑब्जेक्शन. देख, अगर कोई कस्टमर रिजेक्ट करते हैं ना, दे आर रिजेक्टिंग फॉर प्राइस ऑब्जेक्शन, दे हैव क्वालिटी ऑब्जेक्शन, दे हैव कॉम्पिटिटर ऑब्जेक्शन. मेरा कॉम्पिटिटर बढ़िया है, इसका प्रोडक्ट अच्छा है, उनका तो वो अच्छा है. दे आर डूइंग. एंड हर एक ऑब्जेक्शन के पीछे आपके पास स्टोरी देना चाहिए. उस ऑब्जेक्शन आएगा तो उसके पास मुझे कौन सा स्टोरी ऐड करना है वहां पे. एंड आई होप दैट कोचेस विल सपोर्ट इन कमिंग डेज. कैपेबिलिटी ऑब्जेक्शन, रेपुटेशन ऑब्जेक्शन, न्यूनेस. किनके पास न्यूनेस नहीं, जैसे कि एप्पल, दे आर ऑलवेज इनटू न्यू इनोवेटिव थिंग्स. सो there is lot more things about lead generation and marketing mastery. So with this I am just stopping here. If any questions, because there is only 8 minutes I have with me, but there is a lot more things are there. In coming days I can take furthermore, because we have very interesting thing is that is marketing. Honestly friends, business is a wheel. business जो होता है ना वो एक wheel होता है. अब आप मुझे बताइए, अगर इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली और मुंबई टू यूरोप एंड मुंबई टू कैलिफोर्निया, एंड मान लीजिए कि आपके पास रोड है, रोडवेज है. अज्यूम दैट देयर इज ए रोडवे, एंड वो जो बिजनेस की जो व्हील है ना उसमें स्पोक्स लगा हुआ है. एक स्पोक है मार्केटिंग, दूसरा स्पोक है सेल्स, तीसरा स्पोक है आपकी ऑपरेशन, चौथा स्पोक है आपके फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट, एंड पांचवा स्पोक है मैनेजमेंट. अगर कोई एक भी स्पोक नहीं रहेगा, मार्केटिंग नहीं रहेगा, क्या चलेगा? वाई मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज मार्केटिंग 3 तरह का होता है. 3 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग आर देयर. एक होता है रेफरल मार्केटिंग, जो कि प्रेडिक्टेबल मार्केटिंग है कि मुझे पता नहीं, इफ आई डोंट हैव एनी प्रेडिक्शन आई कैन डू समथिंग. दूसरा होता है हाइजीनिक मार्केटिंग. वो क्या होता है? हाइजीनिक मार्केटिंग मीन्स इफ यू हैव अ राइट प्रोडक्ट एंड यू आर सेलिंग टू राइट कस्टमर, आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ रहा है. एंड देन समथिंग इज कॉल्ड मैग्नेटिक मार्केटिंग. तो अगर आपको मार्केटिंग के बारे में सीखना है एंड सेल्स के बारे में डिटेल में आगे जाके आपने को करना है, तो definitely Connect by will assist, and in coming days coaches will support on this, and will take a very highly detailed, very practical things how it can be helpful. इसके अंदर आपको वीडियो बनाना है, वीडियो मार्केटिंग है, जो कि हमने जो प्राइस ऑब्जेक्शन, कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्शन, हर एक का आप 6 पॉइंट निकालिए, उसका वीडियो बनाइए. क्यों क्लाइंट 6 ऑब्जेक्शन करते हैं, एंड वो 6 ऑब्जेक्शन के ऊपर आप वीडियो बनाइए. एंड प्रिपेयर योर 100 लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्शन, एंड वो 100 लिस्ट को आप कम से कम 50 टाइम्स प्रैक्टिस करके जाइए. देन दिस क्वेश्चंस विल बी टेकन केयर,
and you will be the king. Lifetime you will be the king. The king who rules always. Customer will be always love to deal with you. They will feel guilty if you will reject. They will feel very much guilty if you will reject. Because they are not rejecting, you are rejecting them. क्यों आप रिजेक्ट करें? क्योंकि आपके पास enough leads भरा हुआ है. So in coming days we'll come to know how lead generation, there is a 12 powerful templates for lead generation and powerful sales presentation. So with this I am stopping here. If any questions I can love to take questions. Kanak bhai, how much time I have? Only 4 minutes, 5 minutes. You are muted, Kanak bhai. Again, still you are in mute. Yes, I think if there is a question, we all can ask Biranchi. It was a nice session and 18 points I'm sure you will be sharing with all of us. And like, no, I remember doing a lot of sales sessions and all. One of the sessions which talks about how do you see yourself before you leave this world, okay? Like one of the question, जिसमें हम लोग क्लाइंट से पूछते हैं आप इस दुनिया से जाने से पहले अपने आप को माने क्या देखना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं. Then if you give a little time to him and if he goes through his whole life, at the end of the life हम लोग सब चाहते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा करें कि हम लोग एक legacy create करें. Or something, no, wherein we can actually leave something so that people or the world remember us. So I think जब हम लोग ऐसे thought-provoking questions which Biranchi is sharing with all of us, if these questions are asked in a proper way, I think this will create a bell, okay? So this will ensure that the bell is there and finally there will be a lot which is going to be there with us. So they are all really, really amazing and a very, very nice stuff which you have shared. And I think it was a lot of details was there. Maybe you have shared everything in a very, very short time. With each point, I think there needs to be a lot of time given, at least 10 to 12 minutes. And maybe some stories or maybe something like that. You can create some flyers or few things like that also on that, and that can be shared. That can really, really be very, very nice. So thank you so much, Biranchi. Although you are on a holiday, you have just completed his TOT. Huh? कितना commission होता है TOT के लिए? In a year? Anyone, if you know? So that is what Biranchi, I think there are many TOTs in this group already. So, but Biranchi has just completed his TOT on 31st of December. So that way, this is good. So thank you very much for your time and for sharing not only from our side, but from Business Line, Tatva Talk, and each and every association who is involved in this. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much, Kanak bhai, and thank you all of my friends over here. I really love you, each and every of you. And जब भी मैं देखता हूँ ना, मेरे कोई अपने कोई भाई है, ये कोई अपने फ्रेंड्स हैं, एक तो मैं सेशन लेके रखा हूँ, अपने कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर फ्रेंड कभी उनका जो इमेज डाउन करने ही नहीं दूंगा. इसलिए मैं मेरा अपने सेल्स एंड मार्केटिंग को स्ट्रांग करवा रहा हूँ. एंड एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ थिंग्स फॉर दिस, स्पेशली फॉर मार्केटिंग एंड सेल्स, please call me. This samurai is always there, who already created the death ceremony and ready to attack all the time. Customer will never ever king. Good. I think this is one thing which we all will remember. Even I used to think customer is king, customer is God. ठीक है, चलिए God मान लेते हैं, लेकिन king नहीं मानेंगे. Okay, because king is the person who will do the final ruling. So thank you so much, Biranchi, and this was really, really nice. ओके, रेखा जी ने पूछा था इतना सारा क्वेश्चंस. नहीं रेखा जी, मे बी 1 या 2 क्वेश्चंस ही हम लोग पूछे हैं उनसे. सारे के सारे 18 क्वेश्चंस एक ही मीटिंग में नहीं पूछने हैं. आई थिंक दैट विल बी रियली इट विल डिफिकल्ट फॉर हिम. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. आज का हमारा सेशन टुडे इज वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग.
Okay, as I mentioned that we are going to talk about marketing, and we have six experts who have done marketing in their own areas in such a way that it has actually got a lot of business for them, and not only in their own way. Like one of them will be talking about print media. The other one is again talking about YouTube. One of them will be again talking about the BNI's business networking platforms. So we will have all varieties which is actually going to be there. So we will start with someone who is from Siliguri. Okay, he is a pioneer. He is a person who is in this business for many years, and not only that, he is a person who is again a very charming person. It's a delight to be with a person like him. I have visited his house, his city, and okay, and there. And once you go to this city called Siliguri, you will see a lot of hoardings there. And all of a sudden, one hoarding will come wherein you will see Prabin Agarwal. Okay, and then sometime on one particular days आप टेलीग्राफ का पेज खोलते हैं, फ्रंट पेज पे there is this Praveen Agarwal. So this is something which is very unique. Not many MFDs, rather across the world, I will say, are able to do that. And he is so focused with all whatever he is doing in his city that I think it is something which is really a lot to learn. Praveen is a winner of Economic Times Most Influential Award this year with Financial Freedom Fraternity Conference. He has also won many awards with Wealth Forum for his guerrilla marketing strategies. And let's look forward to from Praveen. So over to you, Praveen ji. थैंक यू कनक जी, इट्स अ प्रिविलेज एंड जो भी थोड़ा बहुत 10-12 साल में सीखा है काम करते करते, आई विल बी हैप्पी टू शेयर फ्यू थिंग्स एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू आप मेरी पूरी जर्नी जानते हैं, मॉडल समझते हैं. आई विल रिक्वेस्ट यू टू मेक इट इंटरेक्टिव. आप क्वेश्चन करते रहेंगे इन बिटवीन, तो अपने मोनोलॉग की तरह नहीं करके थोड़ा इसको तोड़ के करते हैं. First of all, I would like to say that जैसे बिरंची जी ने कहा कस्टमर should not be the king, और कनक जी ने candidly accept किया कि so far we have thought that customer is the king, right? So king है या नहीं है वो पीछे की बात है, लेकिन अगर वो अपर एंड हमेशा रहता है, 50-50 रिलेशनशिप रहनी चाहिए. और कई साल पहले की कस्टमर एक्सपीरियंस मुझे याद आता है कि जब एक कस्टमर ने, मैंने बोला कि बिरंची जी बहुत तरीके से बता रहे थे कि सर अपने जैसे बात करते हैं, लगता है कि कहीं तो अपने वहीं पे टोन अलग सेट हो जाता है. तो एक बार एक एचएनआई, 2 स्टोरी बताता हूँ छोटी, फिर मार्केटिंग पे आते हैं. एक बार एक एचएनआई क्लाइंट ने बुलाया और बड़ा पोर्टफोलियो था, कुछ सर साथ ज्यादा बोल दिए, तो दूसरा दिन उन्होंने 10 लाख का चेक देके छोड़ दिया. बोला नहीं, मजा नहीं आ रहा है. तो फिर कुछ दिन थोड़ा गैप किए और फिर नेक्स्ट टाइम जब गए तो खुद का पर्सोना को थोड़ा ढंग से प्रेजेंट किए, थोड़ा कम बात करना, तरीके से रहना, एक मेजर्ड वे में अपनी इज्जत खुद देना. और वो बड़ा चेक आने लगा, आज करोड़ों का पोर्टफोलियो है. एंड और एक क्लाइंट थे जहां मैं वापस बड़ा पोर्टफोलियो था, 2010 में वो 5 लाख की एसआईपी स्टार्ट कर रहे थे और बोलते एक बार थोड़ा से शुरू करते हैं फिर देखेंगे आगे. तो अब डॉक्यूमेंट लाने स्टाफ, पियोन को क्या भेजूं, मैं खुद ही चला जाऊं. 2010 में 5 लाख की एसआईपी सुन के तो फिर मैं ओवरवेलमिंगली बोला कि चलो मैं सर किसी को भेजता हूँ डॉक्यूमेंट मंगाने के लिए. द गाय रिस्पॉन्डेड, आप क्यों भेजेंगे, काम तो मेरा भी है, आपने समझा दिया, फॉर्म भेज दिया, नाउ आई विल फिल अप एंड डू द नेसेसरी सिग्नेचर्स एंड सेंड बैक टू योर ऑफिस. इट्स अ 50-50 थिंग. आपका भी आपका प्रोफेशन है, तो मेरा पैसा तो मेरा बन रहा है. तो एंड आफ्टर अ डिकेड, not almost a decade, after a full decade, I remember the story, thanks to Biranchi ji, that काम आपका भी है, काम मेरा भी है. I am earning the professional fees, पैसा आपका बन रहा है, म्यूचुअल रिलेशन है. अगर मैं सोचूं कि मैं ही कमा रहा हूँ और आप नहीं कमा रहे, तो हम we are short selling ourselves. Fantastic. So coming back to the marketing session, अभी कनक जी ने कहा कि अपने इस सेशन में अभी YouTube वाले भी हैं, मैं न्यूज़पेपर की बात भी कर रहा हूँ और सोशल लीडरशिप की बात कही कनक जी ने. अगर अपने बिजनेस एक्सपेंशन को देखें ना, तो हमको लगता है मेजरली अपने 3 कैटेगरी से अपने को नया बिजनेस आता है.
एक जो हम सब जानते हैं रेफरल, दूसरा एडवर्टाइजमेंट और तीसरा सोशल लीडरशिप। चौथा हमको दिखता नहीं है। तो 3 ब्रॉड चीजें हैं। अगर अपने ब्रॉडली स्ट्रक्चर कर पाए चीजों को तो फिर सब डिवीजन करके अपने किस में क्या काम कर रहे हैं अपने समझ पाएंगे, है ना। तो रेफरल के लिए अपने को इंटीग्रिटी, क्लाइंट सर्विसिंग, क्लाइंट डिलाइट और जो सारी चीजें अच्छे से अपने को करना है वो करते हैं अपने एंगेजमेंट। फिर आई एडवर्टाइजमेंट और सोशल लीडरशिप। सोशल लीडरशिप में अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में अगर रहते हैं, हेड टेबल पे रहते हैं, तो अपना कनेक्ट भी बनता है और ट्रस्ट भी बनता है। दोनों बिजनेस को हेल्प करती है। दोनों को छोड़ के मैं इस पे आता हूँ एडवर्टाइजमेंट में। एडवर्टाइजमेंट विजिबिलिटी प्लस क्रेडिबिलिटी इज इक्वल टू मोर बिजनेस। More visibility, more credibility. You cannot earn credibility only through visibility, but visibility is an integral part. Top of mind recall. आपको अगर किसी को अगर म्यूचुअल फंड करना हो, किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करना हो, तो आपके शहर में, आपके 4 किलोमीटर रेडियस में, आपके डोमेन में आप पहला रिकॉल है या नहीं। अपने को कितनी बार होता है कि अपने को कोई काम करना होता है, लेकिन उस सामने वाला बंदा का फोन आ जाता है चला के, लेकिन गलत टाइम पे आ जाता है, या उस टाइम पे अपने इंटरेस्टेड नहीं रहते। कुछ दिन पहले इंश्योरेंस का सेशन हो रहे थे एंड आई वाज लेस बॉदर्ड। जब मुझे जरूरत लगी, मैं कनेक्ट जी को फोन करके उस ग्रुप में चल के जाके ऐड हुआ। तो नॉट नेसेसरीली कि आप प्रोएक्टिवली जाएं और सामने वाला आपको मना कर रहा है तो वो नहीं करना चाहता है, बट उसको जब याद आता है कि उसको कुछ करना है, तब आप टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल हैं या नहीं। सो यू हैव टू बी देयर एंड अपनी औकात अपने पास है। अपने अगर छोटा दिखेंगे, छोटा टिकट साइज मिलेगा, छोटा काम करेंगे। अगर अपने बड़ा दिखेंगे, बड़ा बिजनेस मिलेगा। इट्स अप टू यू कि क्लासिफाइड में रहना है या फिर शाहरुख खान के साथ 40-40 होर्डिंग में रहना है। एंड जितना अपने देयर इज नो लिमिट, थॉट इज द लिमिट, है ना। और साइमन सिनी का एक वीडियो कनेक्ट जी कुछ दिन पहले ही शेयर किए थे। तो गेम है, खेलते रहना है, इन्फिनिट गेम है ना। एक वीडियो गेम की तरह एक गेम पूरा करेंगे, एक दायरा पूरा करेंगे, फिर गेम थोड़ा आगे जाके हार्ड हो जाएगा, नए रूल्स आएंगे, नए गेम्स आएंगे, फिर उसको पूरा करेंगे। इन्फिनिट गेम में चलता रहेगा। नो वन इज विनर एंड नो वन इज लूजर एंड देयर इज नो फिक्स्ड टारगेट। और टारगेट तो टेम्पोररी है, वो चेंज होता रहेगा, और नहीं करेंगे तो फिर रुक जाएंगे, वो तो गेम है। और साथ साथ अपने पर्सनल लाइफ भी अच्छा से जीते रहेंगे और इसको गेम की तरह एंजॉय करते रहेंगे, राइट। तो मार्केटिंग, अब जब भी अपने अगर सोचें कि मार्केटिंग खर्चा है, एडिशनल है, नहीं हो पाएगा। जब तक इसको इंटीग्रल पार्ट नहीं समझे, जब तक इसको इन्वेस्टमेंट नहीं समझे, फिर वो बर्डन लगेगा। और 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है, लॉन्ग टर्म गेम है। अब सिंपल चीज है, अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि आप इन्वेस्ट कीजिए, भूल जाइए, बहुत दिन बाद देखेंगे तो आपको रिटर्न दिखेगा लॉन्ग टर्म। अगर क्लाइंट पोर्टफोलियो आज क्लाइंट इन्वेस्ट करके 2 दिन बाद से अपने को मार्केट वैल्यू पूछना लगता है, अपने को कैसा फील होता है? या ऐप में देख के भी अपने को क्वेश्चन करता है कि 3 महीना में रिटर्न नहीं बना, अपने क्या बोलेंगे? बट समवेयर अगर अपने नए सिरे से मार्केटिंग शुरू करते हैं तो शायद अपने भी वही करने की कोशिश करते हैं, वैलिडेशन मांगते हैं कि भाई कितना मैंने खर्चा किया, कितना रिटर्न आया, कुछ तो आया होता। अब 2018 की एसआईपी में 2020 में शुरू में क्लाइंट अगर बोलता है कुछ नहीं आ रहा, अपने बोलते हैं 3 साल हो गया सर, कुछ तो आना चाहिए था। और अपने बोलते हैं भाई रुक, 3 साल में नहीं होता, यहाँ 5-10 साल लगते हैं। तो वैसे इन्वेस्टमेंट के, अगर वो इन्वेस्टमेंट है, वैसे ही अगर अपनी यहाँ कन्विक्शन, अपने क्यों टिक पाते हैं? अपने पास कन्विक्शन है, अपने वो साइकिल कई बार देखा है, उनके लिए नया साइकिल होता है। एक बार वो साइकिल देख लेंगे, उनके अंदर भी कन्विक्शन आ जाएगा। कन्विक्शन आ गया, पैसा बनेगा। गोल्ड क्यों है? हर धनतेरस में खरीदते हैं, आप सीने से चिपका के रखते हैं। 55,000 में बेच आते तो आज घर का निकल जाता। ना आप में, हम में से किसी ने बेचा है, ना गाँव में किसी ने बेचा है बिना जरूरत के। तो वैसे ही अगर अपने उसको बहुत ज्यादा जज करेंगे इन्वेस्टमेंट्स को, इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग के ऊपर, तो अपने शायद आपको अपने उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और मीनिंगफुल रिटर्न्स नहीं बनेंगे। अब मार्केटिंग कैसे करना है, क्या करना है, बेसिक फिलोसॉफी सेम रहेगी, लेकिन विथ चेंजिंग टाइम आपको चेंज करता रहना पड़ेगा। शुरू में मेल में अपने प्लेन टेक्स्ट लिखते थे, तब अगर HTML आता था अपने को अच्छा लगता था। आज अगर कोई HTML पेज खुलता है तो अपने को सीधा लगेगा कि कोई मार्केटिंग मेल है, अपने इग्नोर करेंगे। But not necessarily always following the crowd. Sometimes you have to be different from the crowd to get attention. आपको मार्केटिंग करना है तो ब्रॉड बेस आपको अब पहले नींद से ही उठते अपने न्यूज़पेपर पढ़ते थे। बहुत लोग अब मोबाइल में न्यूज़ देखते हैं, सुबह नींद से उठते, वॉशरूम में भी देखते हैं शायद, है ना, सोशल मीडिया देखते हैं, वहीं से दिन की शुरुआत होती है।
तो फिर अपने को भी अपना मीडिया चैनल जो है वो चेंज करना पड़ेगा, नए समय के साथ नए चैनल्स में आना पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं है कि अपने हर चैनल में एक्सपर्ट हो, लेकिन जब तक अपने बेसिक्स नहीं समझेंगे और अपने को एग्जीक्यूट भी खुद करना हो लॉन्ग टर्म में, पर अगर आप बेसिक्स नहीं समझेंगे, उसके अंदर की दुनिया नहीं समझेंगे, तो वेंडर के साथ भी आप ना तो नेगोशिएट कर पाएंगे, ना वो बेस्ट डिलीवरी ले पाएंगे। ऐसा नहीं है कि वेंडर अनएथिकल है और आपको गलत चीज देके चला जाएगा, पर अपनी नीड ही एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और अकॉर्डिंगली आपके टेस्ट के हिसाब से उसको कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे। अगर अपने जाके शेफ को बोलते हैं कि बढ़िया खाना बना दो, अब किसी को तीखा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को क्या पसंद है, आपका ओरिएंटेशन क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप कैसे चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अंदर का आपको अगर समझ नहीं होगी तो आप वेंडर के साथ कोई भी डिजिटल मीडिया हो या सोशल मीडिया हो या आपका ट्रेडिशनल मीडिया हो, आप नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे। मेरी अगर स्पेसिफिक प्रैक्टिस में आए तो आई हैव 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर रेडियस मेरी ऑफिस से, कि इस शहर के अंदर बाकी जगह काम है, ठीक है, इसके अंदर अपने को फोकस्ड वे में काम करना है। एंड इसके अंदर अगर अपने को विजिबिलिटी रखनी है तो होर्डिंग्स है, ट्रेडिशनल मीडिया के हिसाब से न्यूज़पेपर्स हैं, एंड अपना जो, चलिए आज एक छोटा सा वीडियो शेयर करने की कोशिश, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या कनक जी? यस यू कैन। लेट मी ट्राई फॉर अ वीडियो। वॉइस दे दीजिएगा, शेयर साउंड ऑल्सो क्लिक कर दीजिएगा। Superb. That's your daughter? of the age of my daughter, not my daughter. अच्छा, not your daughter. और गांव में कंफ्यूजन है और हम जिंदा रखें इसको। So we have started this campaign from yesterday. Let's begin 2021 in a positive note. अब अगर इसमें देखें तो 20 में हमने घर में काफी टाइम स्पेंड किया है, और जो हम 5 साल में बच्चों के साथ जितना टाइम शायद स्पेंड करते थे वो 1 साल में किया है, उससे ज्यादा किया है। तो एक इमोशनल कनेक्ट, आपको रिलेवेंस समझना पड़ेगा। जैसे विनीत जी बता रहे थे कि ऑब्जेक्शन समझिए और ऑब्जेक्शन के ऊपर बात कीजिए, तो लोग रिलेट कर पाएंगे अपनी चीजों को। वैसे ही अगर इमोशनल एस्पेक्ट, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन की बात करें, इमोशनल एस्पेक्ट की बात करें, तो हमने बच्चों के साथ ज्यादा समय व्यतीत किया है लास्ट 1 साल में, और उस फीलिंग के साथ जब आप मैसेज दे रहे हैं तो वो रिलेट कर पाएंगे। और तो मैंने इसको 6 महीना पहले क्यों नहीं किया रिलीज, क्योंकि उस टाइम पे बिजनेस अनसर्टेन था और लोग थोड़ा पुल बैक मोड में थे, फ्लाइट फॉर सेफ्टी। आज के दिन वो वापस लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं, इन्वेस्ट नया बिजनेस ज्यादा आ पाएगा, और उसी इमोशंस को कैरी करते हुए अपने छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं। तो बीट एंड अगर आप मन बना लेना कि न्यूज़पेपर, कनक जी हमेशा टेलीग्राफ वाली स्टोरी याद करते हैं, तो अगर आप मन बना ले तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है। अपने एक म्यूचुअल फंड कंपनी की कोई भी XYZ म्यूचुअल फंड कंपनी में देखते हैं, एक बंदा से अपना रिपोर्ट अच्छा रहता है, वहां अपना काम हो जाता है, बीट सर्विसिंग, बीट एनीथिंग एल्स। कहीं उसी ऑर्गेनाइजेशन में ब्रांच मैनेजर चेंज हो जाता है, या वो बंदा नहीं रहता, या और किसी को फोन करना पड़ता है, अपना काम नहीं होता है, राइट। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज डिफरेंट एक्सपीरियंसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो वैसे ही अगर आप अपने अगर कन्विक्शन रहे ना, तो क्या होता है कि न्यूज़पेपर हो या आज कनक जी बिजनेस लाइन से इकोनॉमिक टाइम्स, और दूर से अगर सोच लें कि भाई इनका एसोसिएशन ये शायद नहीं यहाँ भरेंगे, शायद नहीं हो पाएगा, तो होता ही नहीं कभी। तो अगर आपने ठान ले कि अपने को करना है, तो वहाँ सुनर और लेटर आप रिलेशनशिप बनाते हैं, और हर जगह भी कॉर्पोरेट भी एनीथिंग एल्स, दुनिया रिलेशनशिप से ही चलती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी मोदी जी टेक्स्ट फोन करते थे कि भाई यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, पैट ऑन द बैक सबको चाहिए, और काम बनता रहता है। तो आपको अगर टेलीग्राफ, आपको अगर होर्डिंग देनी है, आप होर्डिंग के नेटवर्क में रहिए, उनसे दोस्ती बनाइए, आसपास रहिए, वो आपको रास्ता दिखा देंगे कैसे आपके बजट में काम हो सकता है। आपको अगर न्यूज़पेपर के साथ काम करना है, बी इनसाइडर देयर, उनके साथ चाय कॉफी पीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, डोंट बी अ बायर और आउटसाइड वर्ल्ड, ट्राई टू बी वन ऑफ देम। और धीरे धीरे वो रास्ता बहुत इजीली निकल आएगा, वो रास्ता बता देंगे आपको कि भी ऑफ सीजन होता है, इस टाइम पे आपको मिल जाएगा,
किस दिन मेरे पास अगर ये ऐड आता है उसके साथ मैं आपको ये डाल दूंगा, रास्ता निकल आएगा. बजट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम. एंड सोशल मीडिया में क्या करना है, इतने सारे कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं अपने म्यूचुअल फंड कंपनीज के. कुछ दिन पहले पीजीआईएम का एक बहुत अच्छा सा वीडियो आया, बाकी रिलायंस है, बाकी सबके आते हैं. तो अगर आपको करना है, अगर आपने ऑब्जर्व करें चीजों को और आपको जो मन में अच्छा लगे उसी को अपने अपने तरीके से बनाएं, तो काफी अच्छी चीजें. हमेशा अपने कॉपीराइटर हायर नहीं कर सकते, हमेशा अपने बड़ी एड एजेंसी हायर नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्जर्व करके और उसके अंदर से ही अपने अपने लायक इनपुट्स निकाल सकते हैं और चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं. करेक्ट जी. थैंक यू सो मच प्रवीण जी. आई थिंक ये जो सेशन है आपके संग और अदर मार्केटिंग, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कंटिन्यू अगर और भी हम लोग 1 घंटा रखें तो भी चलते रहेगा, एंड लर्निंग विल नेवर एंड. और थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. एंड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर रहेंगे, प्रवीण जी और बाकी सब लोग हैं मौजूद, वी कैन टेक इट. बट हम लोग सारे के सारे मीडिया एक बार सारे जितने भी लोग हैं अपने उनसे समझ लेते हैं, एंड देन वी विल टेक इट फर्दर. नेक्स्ट वी गो टू कोयम्बटूर में हमारे साथ मिस्टर निवास नरसिम्हन है, एंड आई विल रिक्वेस्ट हिम. ही इज in a language, in the Tamil language, he started his YouTube channel, and through his YouTube channel he is reaching out to new prospects and customers. So may I request Nivas to share his journey of his YouTube and his marketing, what he is doing in his own way. Over to you, Narasimhan. Yeah. Sir, is it audible, sir? Hello? Yes, we can listen. Yes, sir. So, good evening, everyone. I'm Nivas Narasimhan from Coimbatore. I'm a mutual fund distributor. So, you can all see the picture. Yeah, during tough times, even we have to learn to swim in the roads also. So, I'll start the presentation with the Warren Buffett quote. You'll have to be a little louder, Nivas, I think. Okay. Or maybe the mic near your, yeah. So I will start with the quote of Warren Buffett. So we all know this, right? If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. We all know this. But today in online world, we should know how to do marketing while you sleep, or if you're on vacation, or if you're doing nothing also. So that's the kind of opportunity we all have. So first of all, we should understand why we should be online, right? So we all know it is cost effective, convenience, geographical accessibility is there, time accessibility is there, and we can make good profit also. In the internet, there are 3 billion internet users are available. So there are a huge opportunity. Let me show you. Now in the last 2 days, with 30 different topics, I made 830 presentations. Can we make it? As an individual, by manually going and meeting, we can meet maximum 4 or 5 people, that's all. But how can we do 830 presentations on 30 different topics? I'll show you how. Let me talk about YouTube first. So we all know that YouTube is an American video sharing platform. It was started in 2005. Then Google bought it for 1.65 billion in 2006. Then in 2017, and it is said that in 2017, if YouTube was a stock, the worth of YouTube would have been 75 billion US dollars at least. In YouTube, there is a 7-year-old small chap. He has a channel named Rayon Toys Review. He reviews just kids' toys. He earns $22 million per year. So that's the kind of opportunity is available for all of us. And there are a lot of people who are making money in India and across regional languages also. In YouTube, there are 1.8 billion users. So there's a huge potential for us. And moreover, next to Google, YouTube is the second largest search engine. And you can navigate in 76 different languages. And there is a data which says that the YouTube channels, people who are earning more than 6 figures per year is increasing every year by 40% year on year. So YouTube is not just a platform to sell our products. The same way we can make money also there. So how it works?
For example, YouTube, there is a platform where there is a huge number of audience available. So when there is a huge number of audience available, there are advertisers who come in. So through Google Ads, advertisers pay to YouTube, and as YouTubers, when we create a content and when the viewers watch in our channel the advertisements, then advertisers pay to YouTube, and YouTube pays to the YouTubers. So how much percentage they pay? They pay 55% of the money which advertisers pay to YouTube. That is huge money. And for this, the minimum requirement is we have to have 1,000 subscribers and we have to have 4,000 watch hours. Currently, I have around 1,500 subscribers. I'm just a starter now. So 2,200 watch hours completed, still 1,800 watch hours to go for me. So let me share my story, how I started. So they say necessity is the mother of invention. See, I used to hear a lot of stories about in TEDx talks or Joe's talks. I used to listen a lot of stories. Then at one point of time, I felt that I also have a story to tell, because there are a lot of common people who have achieved a lot of big things. So everyone had their own story. But I felt that I also have come across different challenges from a very average family or a very lower middle class family. I also had a story to tell. So I prepared a script and I approached TEDx talks or Joe's talks at different forums. But my script got rejected, said it was not impressive. So then one day I thought, why I should post my video in their channel? Why I should not start my own channel? That's how I was preparing. Then suddenly during this COVID lockdown time, it was one of the toughest times. So that time what happened was every day at least 2 to 3 customers used to call us, what to do now, because should I withdraw my money? Should I stop my SIPs? There are a lot of customers used to call us. There are sometimes some customers used to disturb more. So at that time, we used to explain to them, right? So this is not the right time to withdraw. We will tell them SIP, this is the right time where you have to increase your SIP or you have to do top up. And if you withdraw money, this is a temporary slowdown. If you withdraw, it will become permanent. So we used to explain a lot of clients. So clients used to accept. There are very good clients. There are more number of clients used to understand our problem. So the current situation, and they say they will be able to understand our explanation. So, but what happened was one day, one client, without even discussing with me, he withdraw some money. So it happens to every distributor, right? So when a client withdraw money through MyCamps app, the next day when I inquired him, he said that I felt that market will go down further. So with that fear, I withdraw that money. So then I thought, the same kind of doubt will have with all the customers, right? I have around 500 clients. So when I have 500 clients, I can explain maximum 3 to clients or 5 clients or maximum 10 clients I can call and tell them. Then I realized why I should not create a content, prepare a video and post it on as a YouTube channel. So I prepared a content, what SIP investors should do, what lump sum investors should do, so based on different categories, and what and all happened previously. Because if you want to explain how it is going to happen in the next 3 months or 1 year period, we have to explain what has happened in the history. So I explained them and I posted a video without preparing what kind of background I should have, what kind of t-shirt or a shirt I should wear, what kind of even hairstyle. I never worried about it. Just I prepared a video and I just posted on it. So they say blunders make wonders. So initially I got a lot of customers called me and they appreciated, because they also had that fear. So what market is going to happen? What kind of impact it will have on their portfolios? Should I withdraw money and all? But most of the people were silent, or they were busy. They did not call me. So because of that video, I was able to educate more number of people, and I got a lot of appreciation. And also I got a lot of business as well. Next moment, what happened was, there are a lot of people in digital media. They called me. There are a lot of friends who called me and said how you can do it better. And they said that you have a good communication skill, or you have a better presentation skill, so you can improve on that. Then only I learned about YouTube, and I joined a YouTube course. There was another person called Sriram. He has 7.7 million subscribers on his channel. So I joined a course with him. We say to our clients, right, if you want to invest, if you are investing direct, you are not an informed investor. So you have to go through, or you should invest through an advisor. Similarly, if you want to develop a course,
I joined that YouTube course and I started improving a lot, because there are many small things which will impact a lot of things. So I joined that course and I started implementing those things. So what are the challenges? Initial challenge is that initially you will have definitely low viewership. Even today, if I post a video, immediately maybe maximum 100 or 200 people only watch it, or maximum 350 people. So initially there will be low viewership, so we get disappointed. But only most important thing is we should focus on value addition, because somewhere through in the learning part I learned that if you prepare a good content, just post it on the platform and share with your friends and just forget it. Don't expect that they have to watch all the videos, because everybody is busy on their own schedules. So people who find it related, or who people based on the different content, if they're interested, they will watch it. So we should not worry about it, as long as we prepare with 100% dedication. Next, we have to decide what kind of goal. Why are we preparing the content? To educate our clients, or to sell our products, or promote our channel? Because through promoting our channel also we can make money. But if we focus on making money on YouTube or any platform, we might fail it, because it takes a longer duration. At least 1 year you have to post content on a consistent basis. So we have to focus on educating our customer, and we can sell through our whatever are the new products which are coming in, or whatever the best products available. We can, or based on the concepts, we can post on the YouTube. And the YouTube, actually, if you once you post the video on YouTube, the YouTube markets for you. I'll show you a slide. This is a video which I prepared in the month of October 2018. Initially, I felt that this video is about index funds, whether active funds is best or passive funds, which is best. So when I prepared it, I felt it is going to be a superb content. So I shared it with in WhatsApp, Facebook, and everything. So initially, I first 3 days or 4 days, I got some good number of viewers. This is purely through external, wherever I shared it. After that, I focused on other videos. So the people who watched my video was very, very low. Maybe 5 to 10 people every day used to watch it. Suddenly, last 1 week, there are a lot of people who are searching for index funds in Tamil language. So suddenly, last 4 days, there are 500 to 600 people who are watching this video, where I've never focused upon. If you look at the YouTube search, 80% people have searched for that particular content, and they are watching it without me putting any kind of effort. Next slide. This is about health insurance. So this video was posted on June 18th. Initially, the first or second day or up to 1 week, only 100 people only watched my video. So I was a little worried. So then I understood and I moved on. So if you look at the, there is a constant search for health insurance videos regularly. So if you look at the video is consistently growing. So for the initial days, only 200 people watched it. In the last 6 months, totally 6,200 people have watched this video. Even last 48 hours, 50 more people have watched it, which the video which I posted 6 months before. So YouTube is marketing for each one of us. This is yesterday's thing. In the last 28 days, 7,890 views actually, which means that I have made close to 8,000 presentations on 30 different videos, which is humanly not possible. So this is a kind of platform which is available. You can see here, last 48 hours, 830 views, which means 830 presentations. I'm sure that this year, I'm just a 9-month-old YouTuber. Maybe next year it will be in lakhs, definitely. So that's the kind of opportunity we all have. So fortune favors the brave, they say. So because of this, I got good business also. Because initially what happens is we will not get business from YouTube. Initially, we will get good business from our own clients, because the kind of respect you get after you post a video is amazing. Because most of the time what happens is when you meet HNI clients, so when you approach a good number of, even upper middle class segment also, when you go and meet them, they say that I want to start 50,000 SIP or 1 lakh SIP. So we give the right kinds of funds and we then come back. So we don't explain to a bigger clients. We don't do a financial analysis and all for most of the big clients.
because we believe that, okay, that investment will be for some purpose. So most of the time we don't do financial analysis for them. But seeing our video, what kind of financial plannings we do in the video, what kind of plans a person should choose for different kinds of goals, based on that, I've got a lot of respect. Even there are customers who used to disturb me when the funds were not giving returns. They used to call now and they used to tell that, Nivas, if you tell me, I will invest today. If you tell me, I will withdraw today. With eyes blind, they will be able to invest with us, because that's the kind of respect we are getting. And a lot of youngsters consider you as a role model. Next, my behavior itself changed. When I approach a client, initially the kind of presentation skills, or initially whatever kind of preparation I used to make was very, very little. But today I used to prepare well, I used to present well. At the same time, when you are preparing content for YouTube, there's a lot of learning. For example, we cannot just waste our time. For example, if you're going for doing a seminar, we can speak for 1 hour. But in a YouTube, we cannot speak for 1 hour. Nobody's interested. So you have to prepare a content which is very, very specific. You have to tell a 1 hour of session in 10 minutes or 15 minutes. So for that, you have to read a lot of articles. For a small content, even for a 10-minute or 5-minute content, I used to read at least 10 articles, different kinds of articles. So there are a lot of learnings also which happen within us. And also, initially when 3 years before, when I got some sizable 7 to 8 crores of AUM itself, I went into a comfort zone. I felt that, okay, I can slowly grow, because my SIP book was also a little big. So then I felt that, okay, my business is going to grow consistently. But then I felt that there is a huge opportunity available. So there is no point in being in the comfort zone. So after consistently putting videos on YouTube, now even if I wanted to get into comfort zone, I cannot. Because your customers, even if I don't post a video for 5 days, there are customers used to call me and say, why are you not putting videos? So that's the kind of respect you get from people. That's the kind of expectation you get from people. So finally, this is the last slide. When I met, I should thank Kanak Jain sir, because last year when I met Kanak Jain sir in Coimbatore, he asked to various participants, what is your passion? So many people said different things. I told that I'm a marathon runner. Running is my passion. But Kanak sir told that if your business is not your passion, you are not doing justice to your business. Then that changed my mindset completely. Yes, of course, I do run marathons now, but that is my hobby now. So my business is my passion now. So thank you to all the VCs and Kanak Jain sir for the opportunity. Happy New Year, everyone. If you have any doubts, you can ask me. Awesome presentation, beautifully explained, Nivas. I think this is really, really nice. You have shared it bang on, and the use of YouTube channel, the way it can be used or the way it should be used, as explained beautifully. So thank you for that, Nivas. And I think we need a little more class on that. Maybe today only one of our VC was asking, why not let's have a full-fledged session on how to create a YouTube channel and work on it. So I think today is the day he got the answer. So that's really, really good. Okay, so thank you. And more questions and all, they are all there, or maybe you can just put it in the type box. I think we are running out of time, and I just want to do that. But the content is so good, and I think whatever the sharing we are actually having is really, really phenomenal. So coming to Kolkata now with Ashish Sarda. Okay, so Ashish is again a very, very passionate MFD and an insurance professional also. He's also completed, I think, MDRT किया है आशीष आपने या? Yes. 2 company में MDRT किया, Bajaj and LIC. Okay, Bajaj. अच्छा, 4 companies. 2 companies. Okay, 2 companies. So okay, so we had one TOT from Bajaj, and now we have one person who is doing either in his name and his wife's name or whatever way in 2 different companies. So that is how. And not only that, he is into mutual fund distribution and doing extremely good business. And he's also a part of BNI business networking. So over to you, Ashish. Please share, how do you market yourself? Thank you, Kanak sir. Thank you, everyone. मेरा स्ट्रेटेजी ये रहता है, नॉर्मली मैंने अपने लास्ट 3-4 साल में
नेटवर्किंग करके बहुत सारे क्लाइंट को ऐड ऑन किया है। मतलब मेरा नेटवर्किंग के द्वारा लास्ट 3 साल में 100 नए क्लाइंट ऐड ऑन किए हैं। और मेरा ये मानना है कि अपने आईएफए के लिए नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, जो अपने को विजिबिलिटी देता है विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब बहुत कम कॉस्ट में अपने वैल्यू बढ़ाता है। और अपने क्लाइंट के पास भी अपनी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है अगर अपने कोई अच्छे नेटवर्क से जुड़े हैं। जैसे मैं बीएनआई से जुड़ा हुआ हूँ, तो अभी क्या होता है कि मेरे क्लाइंट को कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो तुरंत मेरे को फ़ोन करते हैं कि भाई तेरे पास ज़रूर इसका कोई ना कोई बंदा होगा, और मैं उनकी इस तरह से हेल्प करता हूँ। तो वो एक रिलेशनशिप और एक रेपो इस तरह से बन जाता है, उनको कभी भी इन्वेस्टमेंट की नीड हो, अपने आप वो मेरे पास ही आती। दूसरा फायदा मैंने बीएनआई से ये सीखा है कि भाई हम लोग अपने क्लाइंट से तो रेफरेंस मांगते हैं, ठीक है, बट क्लाइंट के लिए कभी रेफरेंस निकालते नहीं है। जबकि हमारे पास एग्जिस्टिंग 400-500 क्लाइंट है, हमारा एक नेटवर्क है। तो मैंने ये बीएनआई का लर्निंग था कि मैं अपने क्लाइंट के पास जाता हूँ कंटिन्यूली और उनके बिजनेस को समझता हूँ और उनको कैसे हेल्प कर सकता हूँ अपने नेटवर्क के द्वारा। ये मैंने किया। इससे क्या हुआ कि मेरे को क्लाइंट से, अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट से कभी रेफरेंस मांगना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये अपना प्रकृति का नियम है। अगर हम किसी की मदद करेंगे तो वो हमारी इनडायरेक्टली अपनी मदद करेगा। तो ये मैं अपने सारे एडवाइजर को बोलता हूँ कि अपने नेटवर्क में अपने क्लाइंट के लिए कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसको जरूर कीजिए। उससे आपको अपने क्लाइंट के लिए रेफरेंस कभी मांगना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप देगा, क्योंकि आप उसके लिए आपने उसके बिजनेस को समझा। हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क रहते हैं जहाँ पे हमारे एक्सिस्टिंग क्लाइंट है, किसी को कुछ रिक्वायरमेंट है, एक दूसरे को कनेक्ट करा दिया। वो कनेक्ट कराने के बाद वो अब वो क्लाइंट मेरे लिए काम कर रहे हैं। तीसरा फायदा बीएनआई के द्वारा ये हुआ कि बीएनआई से एक बहुत बड़ी सेल्स टीम मिल गई है, मतलब 25-30 लोगों का ग्रुप है। अब अपने को किसी को प्रपोज नहीं करना पड़ता, वो लोग अपने भाई हम उनके लिए हेल्प करते हैं, वो हमारे लिए हेल्प करते हैं। तो एक सेल्स टीम मिल गई है। और ये बीएनआई जो नेटवर्क है, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर मेरा ये मानना है कि हमें कोई ना कोई नेटवर्क में रहना चाहिए, और बीएनआई इज द वन ऑफ द बेस्ट वे टू टू योर मार्केटिंग थ्रू बीएनआई। और मैंने दूसरा ये है कि रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और नॉर्मली क्या होता है, आईएफए जहाँ पे भी जाता है उसको तुरंत धंधा चाहिए, पर मेरा ये मानना है कि तुरंत धंधा नहीं है, कि अगर हम रिलेशनशिप डेवलप करें और धीरे धीरे एक रिलेशनशिप डेवलप होता है और काम अपने आप आता है। और सबसे पहले बात, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हाउ कैन आई हेल्प यू। अगर हम इस पॉलिसी पे काम करें तो बहुत फायदा होता है। दूसरा मेरी स्ट्रेटेजी है कि मैं कहीं पे भी कोई नेटवर्किंग में जाता हूँ तो किसी का भी मेरे को कार्ड मिलता है या मैं अपने कार्ड एक्सचेंज करता हूँ, तो मैं तुरंत उसका नंबर सेव करता हूँ और उसको एक मैसेज छोड़ देता हूँ, नाइस टू मीट यू। इससे मेरा नंबर उसके पास चला जाता है, और बीच बीच में जैसे उसको फिर फेसबुक में अपने आप कनेक्ट कर लिया, फिर महीना 2 महीना में कभी ऐसा हुआ, ऐसे ही कैजुअली मिल लिए। और ये नेटवर्किंग से धीरे धीरे काम आता है। अभी लास्ट 3 दिन का अपना स्टोरी सुना रहा हूँ। एक बंदे से 1.5 साल पहले मिला था, उस समय कोई छोटा मोटा काम हुआ था, अचानक में टच में था, अभी 25 लाख रुपए का धंधा 3 दिन पहले दिया है। तो ये नेटवर्किंग से रिलेशनशिप अगर अपने कंटिन्यू रखे, नॉर्मली क्या होता है कि अपने एक बार मिलते हैं, फिर ठीक है काम नहीं हुआ, इग्नोर कर देते। बट व्हाट्सएप मैसेज, सोशल मीडिया के द्वारा जब नेटवर्क बना रहता है तो अपने आप अपने को जब उसकी जरूरत आती है, जैसे प्रवीण जी ने बताया कि भाई भाई कब किसको क्या जरूरत आ जाएगी ये अपने को पता नहीं है, बट नेटवर्क बना रहेगा, कनेक्शन बना रहेगा। और इवन मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उनके लिए क्या काम अपने नेटवर्क में उनके लिए कोई काम निकाल सकता हूँ क्या, ये मैं बहुत ट्राई करता हूँ। और इस तरह मैं अपने नेटवर्क को ग्रो कर रहा हूँ। और बाकी सारी लर्निंग तो ऑलमोस्ट जो सबने कही और जो सर ने कही वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और ये सारी स्ट्रेटेजी से हम अपने नेटवर्क को ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू। Kanakji, you are muted, sir. Kanakji, you are muted. Most of the time, people think that it is not the marketing, but it is because of Ashish's smile which actually people get attracted and do business with him.
So which I think most of the people who know him actually know that. So thank you, Ashish, for sharing this. And I am sure that the way you are doing business and strategies which you are sharing, people will know more about it. Some people were asking about what is BNI in the group. So maybe Ram will talk a little more on that once he is speaking. So before we go to Ram, which is Guwahati, I will request Datta Kanbargi to share his thoughts. Like he is from Belegam and he is, uh, Datta sir, you are there. Where are you? Okay, yes, he's there. He is also traveling because this, I think that is visible from his background. So he just celebrated his 26th anniversary and then his son's birthday yesterday and today again. So you all are there in some exotic location. And now he is going to talk very special ways he is doing marketing, wherein no planting trees and putting his company's brand name. This is what I know, but I think there are many, many more ways. Maybe Mr. Kanbargi, you can share some of them. Over to you. Good evening, everyone. Energy. हमारे लिए तो मार्केटिंग का पता है कि खुद का ब्रांडिंग करना है. हमारा कहना ये है कि एडवर्टाइजमेंट नीड क्रिएट नहीं करता, नीड होती है किसी को, तब उसको हमारी याद आनी चाहिए. एंड दैट इज हाउ हम विजिबल रखना चाहिए लोगों के दिमाग में. अभी हम नवीन जी को सुना, वो तो एक्सपर्ट है मार्केटिंग में. इवन निवास जी ने भी इससे भी कुछ सीखा. हमने आशीष ने BNI के बारे में बताया. दीज थिंग्स आल्सो विल डेफिनेटली ऐड टू आवर वे ऑफ मार्केटिंग. डेफिनेटली हम 2003-04 से इस बिजनेस में हैं, मी एंड माय वाइफ अनीता. एंड तब से लेके हम इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करते आए हैं. भले 10-15 लोग हो, 20-25 लोग हो, हम जाते थे, उनको म्यूचुअल फंड के बारे में बताते थे. एंड दिस इज हाउ यूज टू मार्केट. हमने आर्मी स्टाफ के लिए किया, एयरफोर्स के लिए, बैंक स्टाफ, कॉलेज, इवन लेडीज एसोसिएशन, मर्चेंट एसोसिएशन, जहाँ जहाँ भी चांस मिले वहाँ जाए और लोगों से कनेक्ट होकर उनसे बात करें, म्यूचुअल फंड के बारे में बताएं, इन्वेस्टमेंट के बारे में. दिस इज आवर स्ट्रेटेजी राइट फ्रॉम बिगनिंग. हमने रोटरी क्लब्स, लायंस क्लब की भी मदद ली है कि उनके क्लब्स में जाके लेक्चर्स दे. एंड दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट द म्यूचुअल फंड. सोशल मीडिया का भी यूज किया है. हमने प्लांटेशन ड्राइव किया था एंड देन थोड़े ट्री गार्ड्स भी बेलगाम सिटी में स्पॉन्सर किए थे, जिसमें हमारा नाम लिखा था, स्पॉन्सर्ड बाय दत्ता कनबर्गी, अनीता कनबर्गी, लाइक दैट, so that those tree guards are still there. So people should remember our name. हमने लेडीज एसोसिएशन में बहुत कुछ करते रहते. एक ही स्ट्रैटेजी नहीं है कि यही एक स्ट्रैटेजी से हम मार्केटिंग करते हैं या ब्रांडिंग करते हैं. लेडीज एसोसिएशन का मीटिंग था, तब हमने एप्पल डिस्ट्रीब्यूट करे थे और उसका एक लेबल लगाया था जिसमें लिखा था कि एन एप्पल to keep you for your healthy life, and monthly SIP in mutual fund for your wealth creation. So that एक मैसेज जाए कि हेल्थ एंड वेल्थ का रिलेशन है. हमने बहुत सारे डांडिया के प्रोग्राम होते हैं सिटी में, या फिर म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे भी स्पॉन्सरशिप देते हैं. लेकिन एक छोटा बैनर दे दिया, थोड़े से पैसा, ऐसे नहीं है कि हम देखते हैं कि हम हमारा बैनर प्रोमिनेंट जगह पे हो, ताकि जहाँ भी मेन प्रोग्राम हो उसके साइड में अपना नाम आए, ताकि विजिबल हो. पूरे 20-25 या 50 बैनर्स में कहीं छिप न जाए. थोड़ा ज्यादा पैसा खर्चा करे बट विजिबिलिटी रहे. दैट इज द आइडिया. हेलो. एक तरफ सेंसस का नंबर आता था और एक तरफ हम हमारे मार्केट. या कैन यू हियर मी? हेलो. Yes, we can hear you now. या ओके. तो एक तरफ सेंसस का नंबर आता था और दूसरी तरफ वही 1.5 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर का हमारा एडवर्टाइजमेंट आ जाता. उसके लिए सिर्फ 100 रुपीज कॉस्ट होता था हर दिन के लिए. तो उसको हम कई महीनों तक चलाते थे, ताकि कम अमाउंट में
ज्यादा विजिबिलिटी मिले, छोटे छोटे ऐड हो। फिर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, आज भी साल में एटलीस्ट 3 to 4 एग्जीबिशंस में हम पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एग्जीबिशन में लोग आते हैं, मिलते हैं, थोड़ा दूर से देख के जाते हैं, बट एटलीस्ट पीपल गेट टू नो अबाउट यू, आप क्या कर रहे हैं मालूम रहता है। अपना एक स्टॉल रहेगा, वहाँ बैनर रहेगा एंड पैम्पलेट्स रहेंगे, कुछ लोग पैम्पलेट लेके जाएंगे और बाद में लोग आते हैं। इट टेक्स टाइम बट उसका फायदा होता है। रिसेंटली अभी लास्ट 2 साल से मैं न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी लिखता अबाउट फाइनेंशियल अवेयरनेस। इंग्लिश में तो बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, बट लोगों को लोकल लैंग्वेज में आर्टिकल्स चाहिए अबाउट म्यूचुअल फंड्स, अबाउट फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में। तो वो जो नीड थी उसके लिए मैंने लोकल न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिया। उसको कॉमन लोगों ने तो पढ़ा ही, लेकिन एक अच्छा फायदा उसका ये हो गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी जो वो भी पढ़ती थी और उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि हमारे बारे में कि यस, इनको प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी है एंड दे स्टार्टेड सेंडिंग पीपल देर, अपने उनके जो क्लाइंट्स होते हैं उनको भी हमारे तरफ उन्होंने कॉन्फिडेंटली भेजना शुरू किया, आप इनके पास जाइए कि आपका काम हो जाएगा। सो दैट इज हाउ इट हैज हेल्प्ड अस। एंड शुरू में हम एएमसी का जो मटेरियल होता है एडवर्टाइजमेंट का, उसको यूज करते थे, बट अभी हमने हमारा खुद का ही मार्केटिंग का मटेरियल बनाया है, जहाँ प्रोडक्ट स्कीम के बारे में नहीं है बट अबाउट कंसेप्ट के बारे में पूरा बुकलेट बना के उसको ही हम हमारे लोगों सभी लोगों को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि किसी एएमसी का नाम ना हो उसमें हमारा ब्रांडिंग हो। और शुरू से हमने और एक बात की है कि हमने हमारे फर्म का नाम कोई एक XYZ फर्म ऐसा नहीं रखा है एडवाइजर्स वगैरह करके, हमने दत्ता कनबर्गी, अनीता कनबर्गी इसको ही प्रमोट करने की कोशिश की है। तो क्योंकि और अभी हमने जो फर्म शुरू किया है वो दत्ता अनीता फाइनेंशियल सर्विसेज करके, ताकि हमारा नाम म्यूचुअल फंड से जुड़ जाए एंड व्हेनेवर देयर इज अ नीड पीपल शुड अप्रोच अस। सो दैट इज द आइडिया। सो बहुत सारे एक्टिविटीज हम करते रहते हैं। फेसबुक मार्केटिंग हो, अभी अनीता जो अच्छे मार्केटिंग में मेरे से अच्छी है तो वो व्हाट्सएप मार्केटिंग करती है। अभी हमने प्रवीण जी से सुना कि यूट्यूब पे उन्होंने एडवर्टाइजमेंट या निवास से का, सो आई ट्राई टू डू, उनको कॉपी करने की मैं कोशिश करूंगा कि अपने जो आर्टिकल है उसको मैं यूट्यूब में वीडियोस के बारे में वीडियोस के जरिए उसको मैं मार्केटिंग करूंगा। सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग एंड थैंक यू कनक जी। Thank you so much, Datta, Kanbargi. It was really nice. And see, today what we are learning and we are understanding is from different viewpoints. Okay, so it's not only about one way of marketing. Okay, it can be through YouTube, it can be through making videos or putting yourself in a newspaper, or it can be through a business networking platform, or it can be through certain planting or maybe writing an article, but this has to be very very consistent. ऐसा नहीं कि एक दिन कर दिया हो गया। प्रवीण जी और दत्ता कनबर्गी, मैंने आप सभी में देखेंगे you will see a consistency is there and that is very very important. You have to do it regularly. प्रवीण जी जैसा बोलते हैं ना, इसको आपको एक मार्केटिंग एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना होगा। प्रोबेबली प्रवीण जी मार्क करते हैं अपना 15%, if I am not wrong, 15% of his expense of the whole year is for marketing. So if you are able to do that, even if you are doing that, I think there is nothing which is to look back. Okay, so let's move to Guwahati and over to you, Ram. So Ram has been very very passionate, बहुत जोश है और इन्होंने अपने आप को एक्सपैंड किया है, अपने बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया है with not only for mutual funds, for insurance and various other things. So how you are doing this marketing? Over to you, Ram. Thank you, Kanakji, and thanks to all the members out here for giving me opportunity to share the thoughts. सबसे मेन चीज़ है सर कि peer learning, the learning through from कनक जी. I am associated with कनक जी since 2015. तो कनक सर के साथ स्पीकर इंस्टीट्यूट का क्लासेस हो या जो भी हो, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बिरंची जी से भी उसी क्लास में मुलाकात हुई थी बाकी लोगों से, एंड लर्नड अ लॉट फ्रॉम प्रवीण जी ऑल्सो, गुरिल्ला मार्केटिंग एंड होर्डिंग। आई मस्ट से प्रवीण जी ने काफ़ी एक अच्छा चीज़ समझाया था
कि आप किसी से भी होर्डिंग लगवाना है, उस होर्डिंग वाले के अगर होर्डिंग खाली है, उससे जाके मिल लो, खाली टाइम में उसका होर्डिंग यूज़ कर लो। जब उसके पास कोई अच्छा न्यूज़ दूसरा कुछ वेंडर का आ रहा है तो हमारा होर्डिंग कहीं और लगा दे, बट जब खाली है तो हमारे होर्डिंग को वहाँ पे लगा दे। मतलब दैट वाज समथिंग रियली, प्रवीण जी, आई अप्रिशिएट you for sharing those ideas, guerrilla marketing, and we are learning through each and every person, as Nivas ji, like the way Nivas ji is doing YouTube marketing in local language. So we are also thinking of doing that in Assamese language or northeastern part, because most of the people are talking about Hindi, English सब चीज़ करते हैं, but local language में नहीं होता. So we are trying to place ourselves इन अ डिफरेंट वे, प्रोफेशनल वे, कि जो सर्विस किसी भी क्लाइंट को आज मुंबई, दिल्ली या अदर कंट्रीज में मिलता है, सो वी आर ट्राइंग टू गिव देम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस, कि गुवाहाटी में बैठा हुआ हम लोग कैसे अपने क्लाइंट्स को बेस्ट सर्विस दे सके. इवन वी हैव गॉट सर्टेन गुड एनआरआईज जिनसे हमारी डीलिंग अच्छी हो रही है. वी हैव गॉन कम्प्लीटली पेपरलेस. आज हमारी कोई भी क्लाइंट्स का पेपर पे हम लोग काम ही नहीं करते, सब चीज़ काफ़ी सारे लोग हैं जो हमने पेपरलेस ये काम किया. सो आई विल ट्राई आज फिनिश जो मेरी फर्म का नाम है, हाउ कम वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर. बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और हम लोग बहुत सारी चीज़ें सेल भी करते हैं, बट हाउ कम फिनिश इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. सो मैं एक वीडियो दिखाऊंगा. आज हम लोग ऑफिस में आज हमारा ट्रेडिशन है, वी हैव गॉट ए टीम मेंबर ऑफ 25 टीम मेंबर्स. 25 टीम मेंबर्स हमारी टीम में. सो हम लोग सबसे एक ही चीज़ पूछते हैं कि आज फिनिश, अगर हम लोग आप सबसे पूछे कि वाई फिनिश इज डिफरेंट, अगर कोई भी एडवाइजर, मतलब कोई क्लाइंट किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम कर रहा है और हम उसे जाके पूछे कि आप फिनिश से क्यों जुड़ना है, क्या है हमारे पास यूनिकनेस, क्या है. सो आई विल शो यू वन वीडियो वेयर आई थिंक मैं वो शेयर करता हूँ. ये वीडियो हम सभी ने देखा होगा. ये मोतीलाल ओसवाल का वीडियो है, जहाँ पे द ऑनर इज सिटिंग आउट हियर एंड वो क्या कर रहा है आप खुद देखो. I think so. Just a minute. इसमें दिस पीपीटी इज क्लियर राइट. सो हम लोगों ने इसमें क्या किया कि आज हम जो भी कर रहे हैं, मेरे टीम को एक ही चीज़ बोला हुआ है कि आज वही प्रोडक्ट हम लोग सेल करेंगे अपने क्लाइंट्स को जो मैं खुद ले सकता हूँ. इफ़ आई एम नॉट कन्विंस्ड अबाउट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वी आर नॉट गोइंग टू सेल. भले उसमें कमीशन, ब्रोकरेज या कुछ भी हो, या कंपनी कोई भी एएमसी वाला कि हमें कुछ भी दे दे, वी आर नॉट गोइंग टू सेल इट टिल द टाइम आई एम नॉट कन्विंस्ड टू बाई इट. आज मेरे क्लाइंट के साथ एक सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि उनको एथिकल सपोर्ट मिलता है, आज ट्रस्ट मिलता है कि व्हेनेवर आई एम शेयरिंग एनीथिंग, व्हेनेवर आई जस्ट कनेक्ट जी, मेरी आवाज़ आ रही है और वीडियो दिख रही है, पीपीटी दिख रहा है क्या? पीपीटी तो है यहाँ पे, इट इज यूट्यूब वाला ही दिख रहा है. आपने पीपीटी फिर से शेयर करना पड़ेगा आपको. ओके. फिर से स्क्रीन शेयर कीजिए. अभी शायद आ गया ना, विजिबल नाउ पीपीटी? यस यस यस. सो हम लोग अभी जब भी अपने क्लाइंट से मिलते हैं ना, एक ही चीज़ रहता है हमारा कि हमारे सारे एम्प्लॉयज़ या कोवर्कर हम लोग साथ में बोले, पार्टनर्स, एक ही चीज़ बोला कि हम जो खुद ले सकते हैं वही देंगे. और हमारी कंपनी का पर्पस है, वी ट्राई टू प्रोवाइड फाइनेंशियल पीस इन द सोसाइटी थ्रू आवर बेस्ट इन क्लास एडवाइजरी सर्विसेज एंड फाइनेंशियल सोल्यूशन. से फाइनेंशियल पीस आ गया है, लास्ट में इस जगह फाइनेंशियल सोल्यूशन है. सो ये हमने फाइनेंशियल फ्रीडम जो कनक जी यूज़ करते हैं अपने साथ में कि सबको फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करना है, वोलेटिलिटी के कोचेस के थ्रू लोगों को अवेयरनेस पहुंचाना है, एंड अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होगा? सोसाइटी. सो हम जो भी काम करें, अगर आज मैं हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा हूँ, म्यूचुअल फंड दे रहा हूँ, तो क्या वो फाइनेंशियल पीस प्रोवाइड कर रहा हूँ? क्योंकि व्हेन आई शेयर विद दिस थिंग्स विद माय क्लाइंट्स, और वो दिल से दिल का कनेक्शन होता है. फाइनेंशियल पीस, आज व्हेन आई लेफ्ट द जॉब in 2014, 7 years back,
आई केम इनटू दिस प्रोफेशन। तो जब मैं जॉब छोड़ के इस लाइन में आया था, आई वाज फाइनेंशियली ब्रोक। मीन्स क्रेडिट कार्ड थी, ठीक है, ऐसा नहीं कि बैंकरप्ट थे, बट लोन्स वगैरह थे, उसमें हमने स्टार्ट किया। तो इवन आई वाज वर्किंग विद इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स में भी किया था, बट हमारी सेविंग्स नहीं होती थी। म्यूचुअल, सबको लगता था कि म्यूचुअल फंड हम लोग जानते हैं, बट नहीं, म्यूचुअल फंड हम लोग ऑनलाइन करते थे, डायरेक्ट करते थे, एंड जब पैसे की ज़रूरत थी तो हम लोग निकाल लेते थे। तो वो हमने प्रैक्टिकल देखा। हेल्थ इंश्योरेंस में हमने रिसेंटली भी मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह देखे, फिर क्लेम्स वगैरह में भी हमने देखा। तो काफ़ी कुछ, तो जो हम लोग यहाँ पे क्लाइंट्स को देते हैं उसमें हम लोग काफ़ी कुछ ट्राई करते हैं कि जो उनके लिए सही हो, उनके लिए बेस्ट हो, वही देते हैं, और जो हम खुद ले सके। तो इसका एडवांटेज ये हमें मिला है कि क्लाइंट्स हमारे पास लॉन्ग टर्म एसोसिएटेड क्लाइंट्स हैं। आज के दिन, वेन लास्ट ईयर 2020 मेनी ऑफ द एडवाइजर हैज़ लॉस्ट बिजनेस, या SIP बंद हो रहे थे, हमारे SIP स्टार्ट हो रहे थे। और लोगों का हम इम्पोर्टेंस ये बता रहे थे, वेन फर्स्ट लॉकडाउन में लोगों का 20-21 दिन में वो SIP बंद करने की बात कर रहे थे। देन वी वर सेइंग कि आप अगर 21 दिन का 21 दिन आपके लिए भारी पड़ रहा है, तो रिटायरमेंट के बाद 21 साल कैसे बिताओगे, कैसे चलाओगे? सो दोज वर द थिंग्स वी वर आस्किंग आवर क्लाइंट्स कि ये सब चीज़ों का बंद नहीं करना है, इसको कंटिन्यू रखना है। एंड थैंकफुली SIP हमारा बढ़ा, YOY बिजनेस आज ही हम देख रहे थे, काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है। ये हमारे ऑफिस में एक हमने प्रोमिनेंट प्लेस बना रखा है, जहाँ पे हम लोग अपने सारे एम्प्लॉयज़, नॉट सारे, अभी तो काफ़ी बढ़ गए, ये 1.5 ईयर्स बैक का है, जहाँ पे हमने सारे ये पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों का सिग्नेचर लिया हुआ था कि अगर आपको लगता है कि फिनिश इज़ देयर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल पीस इन द सोसाइटी, आप साइन करो। साइन करने के लिए हमने किसी को प्रेशराइज नहीं किया था, एंड दे साइंड इट। अच्छा क्या होता है कि हमारा इंटीग्रिटी या क्लाइंट सेटिस्फेक्शन लेवल इज़ वेरी हाई। जैसे बिरंची जी ने कहा था, क्लाइंट इज़ नॉट द किंग। ये सब हमारा यहाँ पे एक ही रहता है कि एम्प्लॉई फर्स्ट अप्रोच। अगर मेरा एम्प्लॉई खुश है तो वह क्लाइंट को भी खुश रखेगा। आज मेरे एक एम्प्लॉई के घर में अगर पैसा नहीं जा रहा है, या उसको मैं मतलब हैप्पी फील नहीं करवा रहा हूँ, तो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन या क्लाइंट वाला पार्ट में इशू डेफिनेटली आएगा, क्योंकि सर्विस तो क्लाइंट को वही दे रहा है, मैं भी दे रहा हूँ, बट उनकी तरफ से भी सर्विस है। ये हमारे रिसेंटली 12 अक्टूबर को ये इकोनॉमिक टाइम्स में आया था, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में वी द फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस, या जैसे आप बोल सकते हो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग हमने लॉन्च किया था, जहाँ पे वी ट्राइड कि हम लोग क्लाइंट को होलिस्टिक अप्रोच, नॉट ओनली म्यूचुअल फंड, बट हम साथ में म्यूचुअल फंड के साथ जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कंप्लीट बिजनेस कंटिन्यूटी। कल को अगर एंटरप्रेन्योर को कुछ भी हो जाए, बिजनेस पर्सन को, तो वह बिजनेस कैसे चलता रहेगा आगे। प्लस नॉट ओनली बिजनेस पर्सन का डेथ, अगर कोई फायर हो जाए बिल्डिंग में, कोई भी इंश्योरेंस, या 6 मंथ तक उनका ऑपरेशन बंद है, तो वह जो कैश फ्लो इन बिजनेस का हैम्पर होता है, वो कैसे कैसे सही रहेगा। प्लस हमारा काम करने का स्टाइल इन जनरल इंश्योरेंस इज समथिंग डिफरेंट। वी आर नॉट वेरी बिग इन जनरल इंश्योरेंस, बारिंग हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस हमारा काफ़ी बड़ा बिजनेस है, बट अपार्ट फ्रॉम हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग अदर प्रोडक्ट्स में हम लोग बहुत एग्रेसिवली नहीं है अभी तक। वी आर ट्राइंग, वी हैव गॉट आवरसेल्फ एसोसिएटेड विथ सर्वेयर ऑल्सो, जो सर्वेयर काफ़ी रिनोन्ड सर्वेयर है, जिनका 30 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है। तो कोई भी जब बड़ी बिजनेस हम लोग क्रैक करते हैं, या वहाँ पे जा कर के हम लोग उनसे बिजनेस की बात करते हैं, तो उनको सर्वेयर से हम दिखाते हैं कि कल को कोई भी क्लेम होगा तो सर्वेयर ही आकर के क्लेम को सेटल करेगा। तो अगर सर्वेयर ने उस बिजनेस को अप्रूव कर दिया है कि ये बिजनेस में ठीक है, यहाँ पे वाटर स्प्रिंकलर होना चाहिए, या ये फिनिश प्रोडक्ट कंस्ट्रक्शन है, आपने गलत ऑक्यूपेंसी दिखा रखा है, तो हम उसके हिसाब से करते हैं। और इसमें हमें बिजनेस भी मिला है। इनफैक्ट जहाँ बैंक ने लोन दे रखा था, वहाँ पे भी बैंक कस्टमर्स ने बैंक को मना कर दिया कि आपने लोन दिया है तो इसका मतलब नहीं कि आप मुझे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहे, यू आर नॉट गिविंग मी फ्री लोन। तो मेरा बिजनेस जहाँ सही सेफ रहेगा, हम वहाँ पे मूव करेंगे, और हमें काफ़ी अच्छे बिजनेस भी मिले हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो हमने किया है डिफरेंट, एंड वी आर ट्राइंग टू ग्रो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। देखिए, जैसे अभी आशीष जी बोल रहे थे BNI के बारे में, एंड कनक जी ने भी कहा था BNI के ऊपर। BNI सब में सबसे अच्छा चीज़ क्या होता है ना, कि बिजनेस नेटवर्क के इंटरनेशनल के थ्रू हमें लॉट्स ऑफ रेफरेंसेस हमें मिलते हैं। इट्स अ ग्रुप ऑफ 50 to 60 पीपल, जहाँ पे मॉर्निंग में हम लोग साथ में बैठते हैं, 7:30 to 9:30 नॉर्मली पहले टाइमिंग होता था, अब तो ऑनलाइन का अलग चीज़ है। मिल करके आपस में शेयरिंग ऑफ रेफरल्स आपस में करते हैं हम लोग। अब BNI को जब से मैंने ज्वाइन किया है, ज्वाइन किया 1.5 ईयर हुआ,
आई कैन प्राउडली से कि BNI का नॉर्मली एक्सपेंसेस इज 35,000 फर्स्ट ज्वाइनिंग, और उसके बाद अलग अलग एक्सपेंस रहता है। बट हम आप बोल सकते हो कि हमने साथ 100 साल में मेरा जितना खर्चा होगा वो हम निकाल चुके हैं। मतलब दैट काइंड ऑफ बिजनेस वी हैव गॉट BNI के थ्रू, और इट्स अ ग्रेट ब्रांड बिल्डिंग प्रोसेस। गुवाहाटी में हमारे यहाँ 7 BNI चैप्टर्स हैं, 7, एंड वी आर प्रेजेंट इन 3 चैप्टर्स। एक में मैं हूँ, 2 में मेरे टीम मेंबर्स हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू बी प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी BNI चैप्टर्स, वो लाइफ में हो, हेल्थ में हो, जनरल इंश्योरेंस में हो, ताकि क्या होता है कि हमें वहाँ से रेफरल आते रहे फिनेस का ब्रांड। क्योंकि आज जैसे आप लोग सोशल मीडिया में प्रमोशन कर रहे हो, यूट्यूब में कर रहे हो, या होर्डिंग्स वगैरह में कर रहे हो, यहाँ पे 60 मेंबर्स एक BNI में अगर है तो 7 चैप्टर्स में 400+ मेंबर्स हो गए, प्रोमिनेंट बिजनेस पर्सनैलिटीज़। तो आज अगर 400 लोगों के पास मेरा फिनेस का ब्रांड जा रहा है, पहले वहाँ से मुझे डायरेक्ट बिजनेस नहीं भी आ रहा है, बट आप सोच सकते हो कि वहाँ पे जो फिनेस का क्लाइंटल पहुँच रहा है। आज कोई भी आदमी अगर किसी दूसरे से पूछता है, कनक जी सपोज BNI में है, गुवाहाटी में है, और उनसे कोई पूछता है कि मैं म्यूचुअल फंड में फिनेस से करवा रहा हूँ, एंड इफ कनक जी नोज अबाउट फिनेस का ब्रांड, तो विल डेफिनेटली स्पीक गुड अबाउट अस। एंड वहाँ पे क्या होता है कि हमारा क्लाइंट रिटेंशन बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त। सो हमें वहाँ से बिजनेस, मेरे डायरेक्ट चैप्टर से तो मुझे बिजनेस आ ही रहा है। जहाँ पे एम्प्लॉईज़ हैं वहाँ पे अभी वो चैप्टर्स लॉन्च हुए हैं, वहाँ से बिजनेस आने चालू हो गए। बट अपना मेन पॉइंट है कि फिनेस की ब्रांडिंग होनी चाहिए, फिनेस वहाँ पे पहुँचना चाहिए। तो अगर आप देखो हमारा जितना भी बिजनेस है, 80 to 90% बिजनेस रेफरल के थ्रू ही आता है। रेफरल में ये सारे पॉइंट्स ईजी टू रीड, जैसे आप लोग देख सकते हो, सेल करना ईजी हो जाता है बिकॉज हमारे पास एक ऑलरेडी रेफरल है, हम कोल्ड कॉलिंग नहीं कर रहे हैं। कोल्ड कॉलिंग में ट्रस्ट बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करेगा फिर आएगा। रेफरल जब मुझे आज कनक जी किसी के पास भेज रहे हैं तो ऑलरेडी ट्रस्ट बन चुका है। आज कनक जी जब तक मुझे नहीं जानेंगे तब तक किसी के पास रेफरल नहीं करेंगे। फिल्ट्रेशन कि वो जिस आदमी के पास मुझे रेफर कर रहे हैं ऑलरेडी फिल्टर्ड हो चुका है, कि वो जो आदमी पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकता या हेल्थ नहीं ले सकता, उसके पास कनक जी मुझे भेजेंगे ही नहीं। तो मेरा ऑलरेडी एक फिल्ट्रेशन, मेरा लेग वर्क कम हो चुका है। ईजी टू एक्सेल। अगर हमें बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना है, बहुत बड़ा करना है, तो हमारे लिए बहुत ईजी है। लिटिल एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट, सारे पॉइंट्स लिखे हुए। वन कैन रीच एनी पर्सन। आज मुझे किसी से अगर मिलना है, से आज मुझे XYZ कोई बड़ा बिजनेसमैन है, उनसे मुझे मिलना है, मैं अपने ग्रुप में आज 70 पीपल आर देयर इन माय ग्रुप, मैं 70 लोगों को बोलता हूँ कि मुझे आशीष शारदा जी से कनेक्शन चाहिए। वो 70 लोगों में से किसी न किसी का कनेक्शन आशीष जी के पास होगा, और उनका रेफरेंस लेकर मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। तो मेरे लिए काफ़ी बड़ा चीज़ होता है कंपाउंडिंग। मतलब ऐसे रेफरेंस आने जब चालू होते हैं, हमारे पास कभी कभी टाइम नहीं होता कि हम रेफरल को हैंडल कर सकें। तो वी आर बिल्डिंग अप टीम, बिकॉज जो रेफरल के थ्रू बिजनेस आ रहा है उसमें शायद अभी हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट हायरिंग 15-20 मोर पीपल इनटू म्यूचुअल फंड। एडवाइजरी लाइन में 15 से 20 लोग हम और हायर करने वाले, एंड ग्रोथ बिकम नेचुरल। ग्रोथ अपना काफ़ी इजीली हो जाता है। मैं नेक्स्ट पॉइंट में आऊँगा, मंत्रा फॉर फिनेस। आज फिनेस कैसे ग्रोथ कर रहा है, कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारा एक ही चीज़ है, हमारी जो भी SIPs होती है लॉन्ग टर्म, हम परपेचुअल SIP के पॉइंट से करते हैं। कस्टमर जब भी बोलता है 5 साल 4 साल का कर दो, हम बोलते हैं नहीं, आप SIP लॉन्ग टर्म रखो, जब आपको बंद करने का बोल देना हम बंद कर देंगे। बट नॉर्मली देखा गया क्लाइंट बंद ही नहीं करता है। जब भी वो हमें स्टॉप करने को ही बोलता है, हम क्लाइंट को वापस बोलते सर एक बार वापस सोच लो, बंद करना जरूरी है क्या, बिकॉज लॉस इज टेम्प्रोरी, ग्रोथ इज परमानेंट। तो वो सब हम डायलॉग वगैरह जो भी आप लोग से सीखते हैं वी डू। टॉपअप SIP हम लोग ट्राई करते हैं, बिकॉज लास्ट मंथ हमारा मंत्रा था कि 2 लाख की टॉपअप SIP, मतलब नेक्स्ट दिसंबर में मेरा 2 लाख रुपये बिजनेस नया करूँ नहीं करूँ, टॉपअप मुझे आ जाना चाहिए। तो अगर 2 लाख का SIP हमारा टॉपअप आ रहा है, तो मैं बैठ भी जाऊँ तो साल का 24-25 लाख रुपये मुझे आने चालू हो जाएंगे। तो मेरा मंत्र यही है कि टॉपअप SIP हम फोकस करें। गिविंग इंश्योरेंस कवरेज, हमने जिस पॉलिसी, जिस म्यूचुअल फंड के साथ भी इंश्योरेंस कवरेज दिया, वो SIPs बंद नहीं हुए, बिकॉज उसमें लोगों को इम्पोर्टेंस समझा के दिया गया। अभी ये सब चीज़ एक और जो सेकंड पॉइंट है, इस पर हमने देखा कि SIP म्यूचुअल फंड, अगर हमने SIP कोई भी किया 4 साल पहले किसी का करवाया था, एंड 4 साल से अगर सेम अमाउंट चल रहा है, एंड प्लस पर्सन का अपना इनकम बढ़ गया। 4 साल पहले किसी का इनकम 50,000 था, 10,000 की SIP की थी, आज 1 लाख का इनकम हो गया और SIP 10,000 का ही चल रहा है। तो हम क्लाइंट से मिलकर एक ही चीज़ बोलते हैं, सर आपका पहले 20%, आपका सेविंग 20% था, तो आपका ठीक था, बट अभी आपका इनकम बढ़ गया, आपने सेविंग्स बढ़ाया नहीं, तो अल्टीमेटली आपका खर्चा बढ़ गया।
और आपने एक्सपेंसेस बढ़ा दिए, तो विच इज़ नॉट गुड। तो हम उनको वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्शन करवा करके ट्राई करते हैं। रेफरल, हर क्लाइंट से रेफरल लेने का ट्राई करते हैं। कस्टमर सर्विस माइंडसेट, कि आज कस्टमर को प्रॉपर सर्विस देना। मतलब ये एक पॉइंट से ये देखा जाए कि क्लाइंट्स को जो उनकी रिक्वायरमेंट हो, विदाउट थिंकिंग कि हमारा फ़ायदा क्या है, उस क्लाइंट को सर्विस देना हमारा रहता है। क्लाइंट के घर तक पहुंच करके टीम है, पूरी टीम जा करके सर्विस देते हैं। वो 1000 का SIP हो, 500 का हो या 5 लाख का हो, हम क्लाइंट्स को मतलब ट्राई करते हैं उनको उनके हिसाब से प्रॉपर सर्विस दी जाए। क्योंकि जो क्लाइंट मुझे 5000 रुपया दे रहा है या 500 रुपया दे रहा है, वो 500 रुपया उसके लिए, शायद जो आदमी मुझे 5 लाख की SIP दे रहा है ना, वो 500 वाला के लिए 500 रुपया ज़्यादा बढ़ा है, तो हमें उसको ही प्रॉपर सर्विस दे। तो हर एक क्लाइंट का डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है। प्रोवाइडिंग इमोशनल कनेक्ट, आज के दिन में अगर हम डायरेक्ट मार्केटिंग, आज जहाँ डायरेक्ट और ग्रोथ वगैरह का पार्ट आ रहा है, आज क्लाइंट को इमोशनल कनेक्ट हमारे साथ मिलता है। आज क्लाइंट डायरेक्टली बहुत कुछ कर सकता है, बट वहाँ उनका सुनने वाला कोई नहीं है। हम यहाँ पे सुन करके उनसे बातचीत करके उनके फीलिंग्स को समझते हैं। प्लस क्लाइंट को ही मालूम है कि मार्केट अगर नीचे गया तो वापस ऊपर आएगा, बट हमसे एक बार जानना चाहते हैं कि वेदर माई डिसीजन ऑफ स्टेइंग विद द म्यूचुअल फंड इज राइट और नॉट। सो हम उस जगह उनको एक सपोर्टिंग हैंड देते हैं। बिल्डिंग अ प्रोफेशनल इमेज, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अगर आप देखोगे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो नॉर्मली हर फार्मेसी वगैरह वाले के पास एक डॉक्टर मिल जाएगा, बट कुछ एक डॉक्टर्स हैं जिनके पास लाइन आपको 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, 7 दिन पहले आपको फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक्सपर्ट बिल्डअप किया, एक्सपर्टनेस लाया, एंड उस जगह उन्होंने काफ़ी सारे ट्रेनिंग्स वगैरह उनसे वैल्यू एडिशन लोगों को मिला है। तो क्या हम अपने क्लाइंट्स को वैल्यू एडिशन दे रहे हैं? सो वी ट्राई टू प्रोजेक्ट आवर सेल्फ एज एन मीन्स प्रोजेक्ट नहीं, हम एक्सपर्ट अपने आप को नहीं बोल सकते, बट वी आर ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस। हम अपने अलग अलग वे से कैसे हम अपना प्रोफेशनल इमेज को बढ़ा सके। बेस्ट सॉफ्टवेयर आज के दिन में मोबाइल ऐप हो या जो भी सॉफ्टवेयर, अभी कनक जी ने कुछ दिनों पहले एनजेन का नेक्स्ट जेन का सॉफ्टवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था। दैट सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा लगा और उस पर हम लोग वर्किंग करके उसको भी लेने के पॉइंट से, तो आज जो भी बेस्ट बन सके अपने क्लाइंट्स के लिए, वी ट्राई टू गिव रेगुलर फीडबैक फ्रॉम क्लाइंट्स। और इस पर हम लोग कुछ इन हाउस रिसर्चेज वगैरह भी कर रहे हैं कि आज हमें अर्नस्ट एंड यंग या दूसरे कंपनी का रिसर्च नहीं चाहिए। आज हमारे क्लाइंट जिनका क्लेम लास्ट 1 ईयर में हुआ है हेल्थ के पॉइंट से, उनका फीडबैक क्या है, उनसे हम कैसे बेटर सर्विस में जा सकते थे। दोज थिंग्स आर वी आर ट्राइंग टू टेक। ये जो हमने वीडियो दिखाया था, एथिकल अप्रोच, वी सेल व्हाट वी बाय फॉर आवर सेल्फ। हम ऐसा कुछ भी नहीं करते जहाँ पे क्लाइंट्स को मतलब हम गलत अलग चीज़ से। ट्रस्टवर्थीनेस, सर्विसिंग थ्रू स्टाफ्स काफ़ी हमारे हैं जहाँ पे हम ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, आज के दिन में हेल्थ इंश्योरेंस में भी किसी का क्लेम होता है तो हमारे पास क्लेम सर्विसिंग के लिए स्टाफ अलग से है। हर चीज़ का हमने ट्राई किया, जरूर खर्चा जरूर लगता है, बट वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है। इसमें ब्रिजेश जालमिया जी का कुछ लर्निंग्स भी काम आता है, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि आज सर्विस के लिए हमारे पास स्टाफ और ग्रोथ के लिए स्टाफ होने बहुत जरूरी है। तो आप लोग से सीख के किए मल्टीपल प्रोडक्ट्स, वन स्टॉप फाइनेंशियल सोल्यूशन बनने के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स। हमारे पास एक और चीज़ है जो यूनिक मॉडल है, वेयर वी मैनेज एडवाइजर्स फॉर डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज। तो हम एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, जहाँ पे हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 11 MDRT बनाए थे, 11 MDRTs। सो आज जैसे उसके पहले MDRT बनाना अलग चीज़ था, लॉकडाउन में लोगों को बहुत मुश्किल लगा था, बट हमने जब ईयर के स्टार्टिंग में प्लानिंग किया था 10 MDRT बनाएंगे बोल के, 11 पे एंड किया। बहुत सारे एडवाइजर लोग मतलब एम्प्लॉयज़ भी छोड़े बीच में, बट नहीं, अपना जो डिसीजन था, एक विजन था, काफ़ी अच्छा गया। यूज ऑफ सोशल मीडिया, अभी हम इसमें थोड़े से वीक हैं, इसमें और बेटर वे में जाना है। ऑल्दो लोगों के हिसाब से हम अच्छे हैं, बट नहीं, हमें लगता है और इसमें काफ़ी कुछ करने का है। बिल्डिंग अ ब्रांड इमेज ऑफ फिनिश विच वी आर डूइंग, प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ को वर्कर, शेयरिंग द विजन विद टीम मेंबर्स एंड ट्राइंग टू बी ट्रांसपेरेंट विद इन डीलिंग विद देम। बहुत जरूरी है कि ट्रांसपेरेंट होना। आज बहुत बार मैं क्या अर्निंग कर रहा हूँ या मतलब बहुत बार हम लोग बहुत कुछ छुपा जाते हैं और उनको लगता है कि मन में ये क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। व्हेन वी आर डीलिंग विद अ टीम को कॉन्फिडेंस में रखना बहुत ज़रूरी होता है, रिस्पेक्टिंग ईच एंड एवरी मेंबर। एंड एक चीज़, सबसे बड़ा चीज़ है जो हम लोगों ने देखा है, व्हेन एवर वी हायर एनी पर्सन, बहुत दिखाते हैं कि अगर आप काम नहीं करोगे नौकरी से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जॉब की गारंटी अगर उनको नहीं मिलती, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी बड़ा स्टाफ हमारे पास नहीं आना चाहेगा। सो वी डू नॉट, जब भी कोई आता है अगर अच्छा काम कर रहा है 6 महीने से पुराना, तो हम उसको एक ही चीज़ बोलते हैं कि अगर आप अच्छे से कर रहे हो, आपकी जॉब कभी नहीं जाने की है।
आप उसकी चिंता मत करो, बस आपको काम अच्छे से करना है। पैसा आपको लॉकडाउन में आज 1 रुपया भी हमने किसी का कट नहीं किया, टाइम टाइम पे प्रॉपर सैलरी हमने सबको पे की। एंड उसके थ्रू क्या हुआ कि कुछ लोग कॉर्पोरेट छोड़ के अभी बैंक्स वगैरह भी छोड़ के हमारे पास पीपल आर ज्वाइनिंग अस। सो वो चीज़ें हो रही है। एंड एम्प्लॉय फर्स्ट, जो हमने कहा था एम्प्लॉय फर्स्ट अप्रोच को हम लोग फॉलो करते हैं। तो दीज आर फ्यू थिंग्स विच वी आर डूइंग, एंड आगे और कुछ आप लोगों से सीख के करने की इच्छा है। सो दैट वाज माय पार्ट। थैंक यू कनक जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। Thank you so much, Ram. This was really nice on your part, sharing all the details. Really, really amazing. There is a lot about Ram. पर अगेन अभी जो लास्ट में हमारे स्पीकर हैं उनके बारे में बता दूं, he is like a ruler in Calcutta and suburbs. रूलर मतलब राजा है ये और ये हम लोग सब यहाँ पे क्लाइंट्स के पास मार्केटिंग की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग विद क्लाइंट्स. ही इज नॉट ओनली क्रिएटिंग अ बिग क्लाइंट बेस, ओके, नॉट ओनली इन कोलकाता बट hundreds of kilometers away from Kolkata city also. He is also creating a network of his channel partners, which means he is creating his own institution by way of creating many more people working with same organization. So now it's all but it will be really interesting for all of you to know the last speaker for the day. Today we have extended the time, but I think आप लोगों का ये जो समय है worthwhile रहा है, because the learning which we are having from all these people is really amazing. So over to you, Arabinda. So really looking forward to listen to you and understand how you are doing all this. Thank you, Kanbargi. Thank you, and thank you all for you to be here for so long time. Nice learning from all of you. It was really lovely session. Personally, I have learned also so many things. So anyhow, about mutual fund, I am going to talk something different today, as because so many strategies we have learned to meet clients, to use audio, video material, to use broadcasting material like newspaper, to use BNI network. But apart from that, whatever I have learned in my life, about mutual fund, I think that as an advisor, we are having something lacking in mutual fund. So that would be the presentation from myself. So let me introduce you myself in a different manner. I have invited someone to introduce myself. Can I just share a video, sir? Sharing a Please share the video. You can share it. Okay. It's a different personality who will be sharing me today. So please allow me to share. விடையின் கதிரை வியாபிக்க கதிரவனை வரவேற்புரைக்காக அழைக்கிறேன். இவன் So that was about me. I think everybody understood, right? Probably Nivas has understood. It was a Malayalam introduction. Sir, whatever I have think in mutual fund industry, wherever we are meeting clients, the same thing is happening with the clients. The same problems clients are facing. I am working in a rural area. It's very rural and it's outskirts from Kolkata. It's not proper town. Whatever I have found, हम लोग का जो क्लाइंट है ना, उन लोगों का यही सब समझ में प्रॉब्लम आता है. वो लोग म्यूचुअल फंड के बारे में लाइक आई हैव आस्क्ड सो मेनी एडवाइजर, इंट्रोड्यूस म्यूचुअल फंड इन 30 seconds. इंट्रोड्यूस म्यूचुअल फंड्स इन 30 seconds. तो एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है जब बैंक या मैं आता हूँ पूरा प्रेजेंटेशन में. Okay, let me go through the presentation about mutual fund, how I have learned and I have pitched to my clients. वो presentation जरा चलाइए जरा.
हाँ, ये व्यू हो रहा है, ये दिख रहा है क्या? Can I get some support from one of the audience? Yes. ओके अगर हम लोग पूछते हैं तो म्यूचुअल फंड का मार्केट शेयर इंडिया में टोटल इन्वेस्टमेंट का पॉपुलेशन में कितना है, विदाउट आस्किंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इट वुड बी लेस देन 2%. टोटल AUM ऑफ द इंडस्ट्री एज ऑफ नवंबर वुड बी अराउंड 30 lakh crore and total SIP book value is 7,300 crore. Okay, why is it so? Okay, let me find some answer. These are our prospects. What I have found, people who are sitting or we are very much knowledgeable, that could be our prospect. बट मेजर प्रोस्पेक्ट जो लोग $multi-billion का बिजनेस किया है, जो लोग बहुत आगे किया है कोई भी कंपनी, वो सारे आदमी कंपनी आम आदमी को टच कर रहा है, आम आदमी को अपना प्रोडक्ट का कंज्यूमर बना है. आप एनीबॉडी यू कैन फेस, यू कैन गो फॉर हिंदुस्तान यूनिलीवर, यू कैन गो फॉर गूगल, यू कैन गो फॉर रिलायंस जियो, एवरीबॉडी हैज देयर प्रोडक्ट प्रेजेंस विद द आम आदमी. एंड इन म्यूचुअल फंड आम आदमी है क्या? इन म्यूचुअल फंड आम आदमी के पास मेरा वॉइस रीच हो रहा है क्या? आम आदमी हमारा प्रोडक्ट ले रहा है क्या? दैट इज द मेन थीम ऑफ द प्रेजेंटेशन. ओके, द कम्युनिकेशन. आम आदमी को जब हम लोग इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के बारे में कहते हैं तो व्हाट आर द कम्युनिकेशन बिफोर सेल्स दे यूज्ड टू गेट. दीज आर द छोटा मोटा कम्युनिकेशन, दीज आर द थिंग्स. देखिए क्या क्या उनको सुनने का आता है. लार्ज कैप, मिड कैप, क्रेडिट रिस्क, PE, डायनामिक, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इसके साथ और भी एक चीज आता है एबोवल, वो भी आता है क्या? सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. आप बोलिए ये सब लार्ज कैप, मिड कैप, मेरा घर का बहन जी, माता जी या पिताजी समझ में आएंगे कि उनका कितना आएगा? क्रेडिट रिस्क फंड एक तरफ से देखिए म्यूचुअल फंड का जो लोग हम लोग नाम या प्रोडक्ट बताता है, क्या क्या प्रोडक्ट उनको बताता है. कम्युनिकेशन हम लोगों का सेल्स क्या आता है? बिफोर सेल्स हम लोग बोलता है SIP, हम लोग बोलता है STP, SIP, STP, SWP. आप बोलिए SWP एक बाहर का एक आदमी, उसको पता भी नहीं है खाना है, इसको खाना है या इसको क्या करना है. स्वीट, मंथली, मेनली फिगर्स ओनली ऑन मैथमेटिक्स. हम लोग सारे कुछ जो कहते हैं सारे मैथमेटिक्स के ऊपर डालते हैं. जब मैथमेटिक्स आप लोग जानते हैं सारे हम लोग. अब देखिए ये रिसेंटली लार्ज कैप फंड का प्रेजेंटेशन, these are the presentation we used to show to our client. इतना सारे चार्ट दिखाता है. देखिए वैल्यू वर्सेस लार्ज कैप फंड क्या क्या होता है, चार्ट दिखाता है. आप बोलिए ये सब फंडामेंटली या मैथमेटिक्स we used to present to our client. My question is that my dear friend, ये कम्युनिकेशन रीच हो रहा है क्या? Are the आम आदमी ऑफ इंडिया कैन हियर अस, कैन लिसन अस? शायद ये हो सकता है कुछ कहते नहीं है हम लोगों को. मैं ये नहीं बोलने चाहता कि एवरीबॉडी इज टू नॉट इज टू अंडरस्टैंड ऑल दिस फैक्ट्स एंड फिगर, बट मेजरली वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड दिस फैक्ट्स एंड फिगर. एंड फैक्ट्स एंड फिगर ये देखिए ये सारे हम लोग प्रेजेंटेशन मैंने एक उठाया है म्यूचुअल फंड का PPT का प्रेजेंटेशन, एक लार्ज कैप फंड का. आप बोलिए, आप जरा 2 मिनट के लिए सोच जाइए, क्या आप ये इंडस्ट्री का आदमी नहीं है? जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया, ये तो मलयालम लैंग्वेज, मलयालम लैंग्वेज कुछ भी ये निवास जी जो है उनको समझ में आ सकता है. लेकिन ये नैप, ये डायरेक्ट सेल्स, ये आपको P रेशियो, डायनामिक फंड, डायनामिक इक्विटी, बैलेंस एडवांटेज, ये आदमी आम आदमी को समझ में आता है क्या? प्रोबेबली दैट इज वन ऑफ द रीजन जहाँ पे ये देखिए हम लोगों का आफ्टर सेल्स कम्युनिकेशन क्या होता है. नैब, IRR, XIRR, PV, FB, इतना सारे फैक्ट्स एंड फिगर, इतना सारे फैक्ट्स एंड फिगर, ये समझ में आता है क्या? एंड इफ दिस फैक्ट्स एंड फिगर जनरली, मेनली फैक्ट्स एंड फिगर में क्या होता है ना, ब्रेन इरिटेट होता है. मेनली फैक्ट्स एंड फिगर इरिटेट्स अस. इमोशन जो सेल्स पिच में जो होना चाहिए. टुडे आई एम हियर टू प्रमोट माय मार्केटिंग स्ट्रेटजी डायरेक्ट टू माय क्लाइंट. फिगर जनरली इरिटेट सर. अभी ये 2 घंटा पकड़ के मान लीजिए किसी को भी अगर मैथमेटिक्स क्लास चलाया जाता तो प्रोबेबली अभी ये पार्टिसिपेशन 90 या 95 या 100 तक नहीं रहता. बिकॉज देयर आर सम स्ट्रेटजी एंड इमोशन इनबिल्ट विद द प्रेजेंटेशन. पीपल स्टिल लिसन. इमोशन जनरली रिलेट, इमोशन जनरली इंस्पायर. जैसे शुरू में ही बताया हम लोगों का सारंगी भैया, ही यूज्ड टू आस्क सम क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन. देखिए वो क्वेश्चन में, इसके बाद अग्रवाल जी ने भी बताया ये क्वेश्चन में सारा इमोशन है, ये क्वेश्चन में ड्रीम छुपा हुआ है.
म्यूचुअल फंड में हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर का साथ चलता है हमेशा। रिटर्न, सर ये लार्ज कैप में 12 का रिटर्न मिला, ये स्मॉल कैप में 30 रुपये रिटर्न मिला, एंड धीरे धीरे क्लाइंट लोगों का एक्सपेक्टेशन हाई हो जाता है। नाउ रियल फैक्ट में क्लाइंट लोगों को क्या समझ में आता है, या क्या प्रेजेंटेशन करना, द वे वी शुड पीच टू द आम आदमी। मान लीजिए ये जो लास्ट कैप में मैंने प्रेजेंटेशन आपको देखा है, अगर ये प्रेजेंटेशन ऐसे किया जा सकता, ऐसे अगर होता ये प्रेजेंटेशन, सर आप एक इंडस्ट्री में पैसा रख रहे हो जहां पर ऑलरेडी 30 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट हुआ है पूरा इंडिया में म्यूचुअल फंड का जरिया से। म्यूचुअल फंड अभी भी जानता है आदमी रिस्क, आप देखिए बैंक, पोस्ट ऑफिस, कुछ भी सेविंग्स एंड म्यूचुअल फंड का इमेज क्या है, परसेप्शन क्या है, बेसिकली बेस्ड ऑन रिस्क। अगर मैं क्लाइंट को ये बोलता सर एक ही डेटा, सेम डेटा मैं अगर डिफरेंटली प्रेजेंट करता, सर ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री में अभी तक आज का डेट में लगभग 30 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो चुका है, एंड एवरी सिंगल डे यू कैन व्यू योर पोर्टफोलियो। आप बोलिए सर कौन सा ऐसे इन्वेस्टमेंट है जहां पे पैसा रखने का पहले एंड बाद आपको बताया जाता है कहाँ पे पैसा निवेश हुआ है, व्हाट आर द प्रोडक्ट अवेलेबल, कौन प्रोडक्ट अवेलेबल है जहां पे आपको बताया जाएगा ये दीज आर द प्रोडक्ट्स जहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करता है, ये खर्चा है, ये खर्चा निकाल के हम लोग का ये प्रॉफिट निकल रहा है, ये प्रॉफिट आपका है। म्यूचुअल फंड इज द ओनली इंडस्ट्री जहाँ पे आप हर रोज इसको ट्रैक कर पाते हो, बेस्ट ऑफ द फंड मैनेजर्स आर डूइंग द प्रोडक्ट। इंडिया का हाईएस्ट रेगुलेशन सेबी ने इसको ट्रैक कर रहा है। ऊपर से देखिए ये चीज जहाँ पे आपको सोच रहा हो विश्वास होगा क्या नहीं, पैसा कितना रखेंगे, ज्यादा रखना चाहिए क्या नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी 30 लाख करोड़ रुपया निवेश हो चुका है। ये भी एकदम ठीक नहीं है सर, इसका साथ हर महीना अराउंड 7,300 करोड़ रुपया आ रहा है। ये म्यूचुअल फंड में एक रिकरिंग डिपोजिट है, जो रिकरिंग डिपोजिट के चलते यू कैन फुलफिल योर ड्रीम, यू कैन फुलफिल योर ड्रीम ऑफ शॉर्ट टर्म। जैसे मान लीजिए 1 साल का बाद एक स्कूल का फीस भरना है, एक इंश्योरेंस का प्रीमियम देना है, यू कैन डू दैट थिंग। एट द सेम टाइम आपको लॉन्ग रन में जो डिमांड है वो भी आप फुल कर सकते हो। ये जो म्यूचुअल फंड है, ये जो फंड है ना सर, ये देखिए इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन सा ऐसा चीज है जिसका आपको पहचानता नहीं हो, आप कंज्यूमर नहीं हो। ये यही सब कंपनी का, मान लीजिए एचडीएफसी या इंफोसिस का हम लोग अभी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है। रिलायंस का, जियो का साथ बात हो रहा है सर। ये जो वोलाटिलिटी कोच का हम लोग का कॉमन आदमी का वीडियो है, इज वेरी पावरफुल डियर। दिस कॉमन आदमी का वीडियो मैंने बहुत सारे सेमिनार में चलाता हूँ एंड इट्स रियली लाइफ सेटिंग। एवरी सिंगल डे हम लोग ये जो कंज्यूम कर रहा है, कोई ना कोई हम लोगों से पैसा बनाया जा रहा है। सर आईटीसी पैसा बनाया जा रहा है उनको आटा से, या सीपला पैसा बना रहा है आपको दवाई से। सर व्हाई डोंट यू मेक मनी फ्रॉम दिस कंपनीज प्रॉफिट। अभी देखिए ना लॉकडाउन में जियो का कितना सुंदर बिजनेस हुआ, सर आपने पैसा बनाया क्या? सर ये लॉकडाउन में इन्फोसिस कितना सुंदर बिजनेस किया। अभी कौन सुंदर करेगा या कौन खराब करेगा, ये फंड मैनेजर लोग है, वो लोग तय करता है, वो लोग इस जगह में अच्छा रिसर्च करता है। तो आप लोग सर, हम लोग क्या करते हैं सर, कुछ पैसा इस जगह में बिजनेस में भी डाले और थोड़ा सा टाइम दे इसको। ये एक बिजनेस है, जैसे एक बिजनेस में लगाता है आदमी 6-7 साल इस्तेमाल वेट करता है। तो these are the companies where we can invest your money, we can invest your hard earned money and you can fulfill your goal। and this goal, वो जो गोल आपका है, वो जो रिटायरमेंट का सपना है, जो सपना आप देख रहे थे 55 साल में उम्र में देखेंगे, जो ड्रीम आपको पेन दे रहा है, क्या कैसे फुलफिल होगा, यही इसी एक जरिया है। यही जरिया से धीरे धीरे थ्रू एसआईपी हर महीना आप पैसा डालते जाओ। जब मर्जी बंद करना है, चलो 2-4 महीने के लिए आप बंद कर दिया, थोड़ा बहुत पैसा आ गया तो चलो भर दिया अपने उसको पैसा, थोड़ा सा ज्यादा डाल दिए। बच्चे का जन्मदिन है, कुछ कैश गिफ्ट मिला उसमें डाल दिए है सर। तो ऐसे ऐसे करते यू कैन इन्वेस्ट इन दिस प्रोडक्ट। नाउ सर माय सेकंड क्वेश्चन टू माय एमएफडी। आम आदमी हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग म्यूचुअल फंड वाले, मैंने देखा हो एक्चुअली आई यूज्ड टू सेल म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, वेरियस अदर प्रोडक्ट्स आल्सो। आई हैव सोल्ड देम इन माय लाइफ। मैंने क्या देखा, हम लोग सोचते हैं कि आदमी को रिटर्न चाहिए। मैं आपको पूछता हूँ क्वेश्चन सर, आदमी को हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न पहला पसंद है या लो रिस्क एंड सेफ रिटर्न ज्यादा पसंद है? इन्वेस्टर को हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न, इज इट देयर मेन चॉइस, और लो रिस्क और सेफ रिटर्न, इज दैट देयर finest or most of the choices? Whatever I have found,
low risk and safe feeder. These are the things clients are looking for, and exactly the same thing is to be done in bank. बैंक को आप एक बार सोचिए, एक आंख बंद करके आप घर में जाकर आपका पिताजी को, माताजी को, जो लोग हम लोगों का फिनेंशियल वर्ल्ड में नहीं है, जो लोग हम लोगों का फिनेंस का लैंग्वेज पता नहीं है, उनके एक बार बोले बैंक का मतलब क्या है, वो लोग बता देगा बैंक मतलब सेफ, बैंक मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, बैंक मतलब लोन। पूछिए उन लोगों को इंश्योरेंस का मतलब क्या है, वो लोग बता देगा इंश्योरेंस का मतलब कुछ भी हो जाता है तो पैसा मिलता है। इंश्योरेंस का मतलब यही होता है क्या इंश्योरेंस अगर करो तो इंश्योरेंस में लो रिटर्न लेकिन आपको सेफ्टी मिलेगा। देखिए यही सब जगह है ना जहाँ पे ज्यादा पैसा आता है। हम लोग जितना भी डेटा डालते हैं वो सारे डेटा में आप देखिए बैंक में, इंश्योरेंस में एंड पोस्टल सेविंग्स में, यही तो तीनों जगह है जहाँ पे वो, या तो फिर ऐसे ही कुछ जगह जहाँ पे आदमी का पैसा ज्यादा सेविंग्स होता है। एंड दीज आर द फैक्ट्स माय डियर फ्रेंड्स, पीपल आर नॉट लुकिंग फॉर रिटर्न। अगर रिटर्न के लिए रुकता ही रिटर्न को देखता तो एवरी सिंगल पीपल इज टू वैल्यू देयर गोल्ड। जैसे अग्रवाल जी बताए थे, गोल्ड हम लोग 55,000 में बेच चुके होते। पीपल यूज टू लुक फॉर सेफ्टी एंड वी एज ए इंडिविजुअल financial distributor or investment distributor or mutual fund distributor, we used to hard this hard fact. Basically safety is the game. Now आम आदमी इन्वेस्ट इन मेनली फॉर सेफ्टी। म्यूचुअल फंड को कैसे सेफ्टी प्रेजेंट करें, म्यूचुअल फंड का साथ में तो रिस्क लिखा हुआ है। हाउ वी कैन प्रेजेंट म्यूचुअल फंड इन ए सेफर वे। आई थिंक फॉर ए न्यू इन्वेस्टर डेट इज एसेट क्लास, लिक्विड इज एसेट क्लास। slowly and gradually people will understand about the business। हम लोग क्या करते हैं, कोई आदमी आया तो अच्छा हुआ, अभी देखिए ना हम लोग सब कोई हंस रहे हैं क्योंकि मार्केट बहुत उछाल मारा है। पीपल आर अर्निंग मनी बट दिस मनी हार्डली फ्यू मनी विल स्टे एज बिकॉज वी हैवंट टॉट। हम लोग क्लाइंट को सिखाया नहीं है कैसे पैसा बनाता है, कैसे इसको रखना है, उसका रूल क्या है। तो these are the main thing about mutual fund। क्लाइंट का दिमाग में आता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, एडवाइजर बिहेवियर। मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, पैसा किसका है सर, पैसा किसका है, ड्रीम किसका है, गोल किसका है। पैसा है आपका, हम लोगों का, इन्वेस्टर का। किसका पैसा है, इन्वेस्टर का। रिस्क किसको लेना चाहिए, हु शुड टेक रिस्क, इन्वेस्टर रिस्क लेगा या हम लोग लेंगे। रिस्क कौन लेता है, रिस्क के लिए कौन बायस्ड है, कौन प्रमोट करता है ज्यादा से ज्यादा इक्विटी। इक्विटी प्रमोट करना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ प्रॉपर डिस्क्लेमर नहीं देके प्रमोट करने से रिस्क हम लोगों का ज्यादा हो जाता है, कि क्लाइंट रहे या ना रहे। सिर्फ हम लोगों को नहीं, इंडस्ट्री को रिस्क हो जाता है। एक बार एक क्लाइंट नेगेटिव रिटर्न लेके चला गया तो क्लाइंट को घूम के मार्केट में आना बहुत ही टफ होता है। एटलीस्ट व्हाट एवर आई हैव अंडरस्टूड इन माई लाइफ इन दिस मार्केटिंग। तो I think we should change our language. We should change our language. It should be easy। एक SIP को हम लोग बोलेंगे क्या, एक रिकरिंग डिपॉजिट। म्यूचुअल फंड को बोलेंगे सर म्यूचुअल फंड, बेसिकली म्यूचुअल फंड बहुत इजी है सर। म्यूचुअल फंड के दो ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा, एक है FD टाइप, एक है इक्विटी ओरिएंटेड। ये इक्विटी टाइप, FD टाइप में सर रिस्क बहुत ही कम है, जहाँ पे आपको 5-6 का रिटर्न मिल जाएगा। एक है इक्विटी ओरिएंटेड, जहाँ पे रिटर्न तो मिलेगा लेकिन टाइम देना पड़ेगा। तो दीज आर द टू वर्ड्स आई यूज्ड टू यूज टू माय क्लाइंट्स, FD ओरिएंटेड और इक्विटी ओरिएंटेड। क्लाइंट लोग जनरली FD ओरिएंटेड प्रोडक्ट में ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि इक्विटी ओरिएंटेड में मैं बोलता हूँ कि पैसा आपको शॉर्ट टर्म में घट भी सकता है, मनी कैन बी लोअर डाउन। तो एनी हाउ माई request to all of persons who are listening today, please change our language and the world will change। Change our language in a simplest way, जितना सहज हो सके, जितना आसान हो सके हम लोग ये बात करेंगे। हम लोग फिनेंशियल एडवाइजर बन के बात किया करने से बिजनेस तो आ सकता है कोई ही सेगमेंट में, शायद एक ही नहीं सेगमेंट में सर, एक ही नहीं सेगमेंट में टच करके बहुत कुछ करना तो मुश्किल हो जाएगा सर। दिस शुड बी द वे ऑफ स्पीकिंग, बहुत नॉलेजेबल होकर स्पीकिंग करना। लाइक आई हैव जस्ट टेकन एन एग्जांपल फॉर दिस पिक्चर और इजी हार्ट रिलेटेड एग्जांपल। मार्केट अप डाउन होता है, मार्केट ऊपर आता है नीचे आता है। आदमी ऑनलाइन में क्यों नहीं इन्वेस्ट करता है, क्योंकि वी आर देयर, हम लोग सब हैंडल करते हैं। हम लोग विद इमोशन बोलता है सर ये पैसा ऐसे मत देखिए, ये मार्केट गिरेगा लेकिन आपको रिटर्न का टाइम में अच्छा देगा, क्योंकि यही हिस्ट्री है। वी यूज्ड टू गिव टच, दैट टच कैन नॉट बी गिवन बाय ऑनलाइन। तो
दिस इज व्हाट इज द मेन जॉब ऑफ आवर एडवाइजर. एक अच्छा चीज बताया राम जी ने लास्ट में, क्या जो हम लोग बाई करता है वही हम लोग खरीदते हैं, सेल भी करता है. देखिए कॉमन कॉमन होना बहुत अनकॉमन है. पीपल आर ट्राइंग टू बी अनकॉमन. मैं बोलता हूँ मेरा थियरी है कि बी कॉमन मैन. कॉमन मैन शुड बी द स्ट्रैटेजी. आप कोई भी सस्टेनेबल सक्सेस को देख लीजिए, दे आर वेरी मच कॉमन. देयर ड्रेस कोड, देयर बोलना, एवरीथिंग. इवन हम लोग का लीडर कनक जी को देख लीजिए, ही इज वेरी सिंपल. ही इज वेरी उनको जब मर्जी हो सके कुछ बात कह सकते हो. मैंने मेरा बड़ा भाई जैसे लगता है. दैट इज द मेन थिंग. कॉमन इज वेरी मच अनकॉमन. It being simple is not so simple, my dear. I am trying to be simple, more simple, more simple, more simple, more convenient to my client. And thank you and Pranam. Before the video, before this thing, before closing my presentation, I would like to share one more video dedicated for my presentation. So this is the language we should learn for my client. That was from me, my dear friends, and I am trying to be simple, more trustworthy, more following the way of truth. And the meaning of the song is that it's a Bengali song. It's a very popular song in Bengali. The song or the voice or the language should be very easy reachable to everybody. Language should not be very much complex and should not be targeted for one kind of target audience. So thank you, namaskar. Wish a very good new year. Thank you, Kanukji, for giving me this opportunity to share my experience. Yeah, thank you, Aravindo. And I think the message from the song was that it is your language is very, very important. In what language you are communicating to your investors, that can be the regional language or that can be the language what a client understands. I think the message was very, very clear. And for marketing, I think this is very, very important that we understand what the message is and how it is getting to the client. So that was amazing. So one more question to Aurobindo before we end. And that question is that, Aurobindo, how are you managing to create your channel partners? Do you do any marketing for that? Yes, no? Yes, sir. Actually, myself, I moved from personal selling to channel marketing. I am dreaming to make my company Shafullo Samriddhi in Pan India presence. Our target audience, I mean channel partners, is mainly insurance agent. We used to pitch insurance agent. Right now, we are having 82 partners associated with us. Last time, Kanakji, we met with you, it was around 45. So it is right now around 82, and all this thing has been turned in lockdown period. In lockdown period, our business has grown superbly. Our AUM, personal AUM in 2020 Jan was around 51 crore. Right now it is around 70 crore and 89 lakhs of SIP book with 82 channel partners. So we are hoping to be around 300 plus by next year end, calendar year end. And the way we used to pitch insurance agent to join in mutual funds, and we used to tell them that these are the products from where you can get easy entry to your prospect and with the किसी का साथ झगड़ा नहीं है. एक्चुअली एज ए इंश्योरेंस एजेंट मैंने क्या देखा हो, इंश्योरेंस एजेंट हमेशा समझता है कि देयर प्रोडक्ट इज गुड. म्यूचुअल फंड में हम लोग समझते हैं हम लोगों का प्रोडक्ट अच्छा है. किसी का साथ कोई लेना देना झगड़ा नहीं है. ये कपलिंग है. until unless we couple both of the product, it is very hard to be unbiased. पहले अनबायस्ड होने के लिए तो सारे प्रोडक्ट का जरूरत है मेरा पास. So that is the way we used to pitch to the insurance agent.
to join hands to join hands with us, and we give required support, proper training to them, and these are the way we are going ahead, Kanakji. Thank you. Brilliant, brilliant. That was really, really nice. And I think that this was one major reason why I wanted Arabinda to please come and share, because we all MFDs can actually grow our business not only by increasing the client base, but by also creating more channel partners, more partners. So that is again one very, very good thing. So thank you very much, Prabin ji, for sharing the guerrilla marketing strategy. Thank you very much, Datta Kanbargi, for sharing the strategies wherein you spread the message of your presence in your city. Thank you, Ashish, for sharing all your BNI connects. Thank you, Ram, for sharing all how the way you have grown, the marketing strategies which you use in Guwahati. Thank you, Nivas, for sharing your YouTube strategies. And finally, thank you, Arabindo, for sharing all the way you spread your marketing and Aam Aadmi Bhasha, Aam Aadmi language, Aam Aadmi talk. So this was all really, really very, very nice. Thank you so much, each one of you. Today our session has exceeded the time, but I think still most of us are there. So we are just completing our 18th episode and 3 more to go, and then we are done with this. So next session is on relationship. And after that, we will have some people who will come from the different industry. We are inviting some managing directors and CEOs of some of the biggest manufacturing, real estate and technology company to understand that. And then finally the episode 21, which will be on 23rd Jan. So we really look forward to each one of you to participate in the next 3 sessions in the coming days. So with this, again, a big thanks to all the associations participating in this particular program. And thank you very much to all of you.